ला 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 दोस्तों दोस्तों कंट्रोवर्सी होने वाली हैगी आज, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाने, ठीक है। मजा आएगा, बातचीत करेंगे भाई। देखो कोई गाली गलौज नहीं करने वाला, अगर गाली गलौज करेगा वैसे ही बैन है, सीधे सीधे भाई। देखो पता है कि आज बहुत ज्यादा गाली गलौज हो सकती है, क्योंकि तो काफी कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट लेके आया हो गया या तो चुपचाप यार। देखो हमारे गेस्ट आने वाले हैं बड़े लोग, और उन्होंने हमें ये चीज दी है दिखाने वाली। आपको पता ही है, सुई मैंने पहनी हुई है। सैंटियागो बढ़ने वाला अपना घर बन ही चुका है। उल्टा दिख रहा होगा, उसको सीधा कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता लॉल बच्चों। बट सारे जल्दी से जल्दी वक्त पहले आ जाओ, मजेदार स्ट्रीम होने वाले। लिटरली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक आउट देयर। व्हाट्स अप ब्रदर, लॉन्ग टाइम नो सी। Nathan bro, you wanna join in? Just let me know, brother. Nathan bro, if you just wanna join in, just let me know. We'll send you the link right here right now. ठीक है, प्रणय भाई is coming in 5 minutes. तब तक हम लोग बातचीत कर लेते हैं, तब तक हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिंग भाई, get ready to celebrate next week. Keep yourself free. Okay brother. दोस्तों जितने लोगों ने नेथन भाई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो। ही इज अबाउट टू टच 1K, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो जल्दी से कर दो वक्त से पहले। और तुम लोग बता दो भाई, मतलब 30 नॉमिनी आ चुके हैं, 30 नाम आ चुके हैं। क्या तुम्हें ऐसा मतलब, मैंने कुछ वीडियो नहीं देखी थी, भावेश भाई क्या हाल है? मैंने कुछ वीडियो नहीं देखी थी, उससे पहले मुझे लग रहा था दिस इज दी क्या कहते हैं, लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बैलन डोर नॉमिनी, जिसमें 30 नाम आए हैं। एंड एवरीबॉडी इज लाइक कि हाँ भाई ये नाम भी ठीक है करेक्ट, ये नाम भी ठीक है करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बट क्या कहते हैं, धीरे धीरे मैंने 2-3-4 वीडियो देखी एंड देन आई एम लाइक कि भाई नहीं, थोड़ी तो शरारत है और थोड़ी चीजें हैं। तो तुम लोग बता दो, तुम्हें किन किन नाम को देख के लगता है कि ब्रो इससे तो नहीं होना चाहिए था, ये बंदा तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, ये बंदा इस लिस्ट में कर क्या रहा है? क्योंकि देयर आर मेनी नेम्स, उसके बारे में बात करेंगे। 30 के 30 लड़कों की फोटो मैंने निकाल ली है, ठीक है। उस सारी चीजों की बात में करेंगे। और बताओ कैसा चल रहा है भाई, जल्दी से बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा दिन, क्या चल रहा है सीन? बफरिंग, व्हाट्सअप B9, व्हाट्सअप भाई B9, आई अप्रिशिएट द फैक्ट। क्या बफरिंग चल रही है? नहीं यार, अब साढ़े where the hell is Rashford, a player who scored 30 goals, 12 assists, wouldn't even get nominated? Bhai, B9 bro, what's up? Ter Stegen not being there for equaling the most clean sheets is a robbery. How can you take Onana over Ter Stegen? Yes, भाई सारी बातें करेंगे। देखो बहुत तगड़ी बातचीत है, बहुत भाई। टर स्टेगन का ना होना एक बहुत चीज है, ठीक है। मैंने जल्दी से टीसी जो नेत्र को सब्सक्राइब कर दो, वरना रैमजेल बैलन डोर जीत जाएगा, पता नहीं, ठीक है। वो तो है ही नहीं। पहली बात तो मोहम्मद सलाह इज देयर, मतलब मैं कंट्रोवर्सी की मैं आपको नाम दे रहा हूँ, मोहम्मद सलाह। भाई दोस्तों आपको लगता है कि मोहम्मद सलाह का होना इज जस्टिफाइड? यस भाई, मोहम्मद सलाह होना चाहिए था, मतलब डिस्पाइट लिवरपूल आर इन द क्या कहते हैं वो, बट देयर इज नो प्लेयर हु कैन बी। जैसे आपने मार्कस रैशफोर्ड का नाम लिया, तो यू आर टेकिंग द नेम ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, ठीक है, बढ़िया। बट इन प्लेस ऑफ हुम, मतलब इज डू यू, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, क्या करीम बेंजेमा डिजर्व करता? मेरे हिसाब से तो करता था भाई, मेरे हिसाब से तो करना था, ठीक है। डेफिनेटली करता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। ही शुड बी देयर, ही इज देयर। मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो आप किसकी जगह रैशफोर्ड को लेके आते भाई? माय क्वेश्चन इज मैथ्यू भाई। एंड भाई बहुत अच्छा लगा B9 भाई, कल आपने एक कमेंट करा, फिर आपने चेंज कर दिया। आई लाइक इट, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी वेरी मच। एक मिनट रुक जाओ। किस सलाह ओवर रैशफोर्ड फॉर मी? ओके डेथ स्लेयर भाई ने सलाह में, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया। अरे कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता तो फिर आप इथे ऑन दे ही नहीं भाई, क्योंकि मैं तो वो सब्सक्राइबर मोड ऑन कर रखी है ना भाई। तो व्हाट आर यू सेइंग? मतलब आप ऐसा सब्सक्राइब करते हो और अच्छा फिर चले जाते हो। यू आर, या सलाह डिजर्व टू बी इन द लिस्ट, सलाह डिजर्व्स टू बी इन द लिस्ट। सो आप रैशफोर्ड लाना तो चाहते हो, लेकिन किसकी जगह? जैसे टर स्टेगन को तो समझ आता है कि भाई आंद्रे ओनाना की जगह लेके आते, वो क्यों लेके आए, ठीक है। वो चीज बातचीत समझदार है, ठीक है। कि भाई एक बंदा है, उसकी जगह हमें पता भी है कि कौन होना चाहिए था, दैट इज इजी। मैं फोन दिया यार, एक मिनट में आप सबको शक्ल दिखा दूं उन लोगों की जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो बंदे सिलेक्ट हो गए, उनकी शक्ल दिखा दूं तो आपको। एक एक करके नाम लेते हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं, देखते हैं कि भाई कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा बंदा है जो बिल्कुल क्यों है ये। और कोई कोई ऐसा, देखो भाई आंद्रे ओनाना इज फर्स्ट, जिसके जो आप लोगों के हिसाब से
क्या कहते हैं, ब्रिंग आवर बॉय नेथन ऑन द लाइव। यस भाई, मैं उनको लिंक ही भेज रहा हूँ। नेथन डिमेलो, no Salah and Rashford both deserved a place in the place of Gvardiol। किन जगह होना चाहिए था इन द प्लेस गवार्डियोल और किन, वो उसकी बात कर रहे हो आप। गवार्डियोल इज देयर, बेंजेमा इज देयर, मूसेआला इज देयर, मूसेआला दोस्तों अगेन अगेन अगेन, ठीक है। मोहम्मद सलाह, साका ओवर रैशफोर्ड, ओके। योविच, बेलिंगम, बुकायो, साका 100% शुड हैव बीन देयर, कोलो, मुआनी 100% है भाई। मेरा नेट सही चल रहा है भाई। भाई अपना नेट देख भाई, मेरा नेट तो बिल्कुल सही है, मैंने तो चला रखा है, मेरा नेट सही है गाइज। अगर नेट में कोई दिक्कत है तो एक मिनट व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओ। नहीं कर रहे ब्रफर भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100%, 1000% सही है। गवार्डियोल की जगह होना चाहिए था रैशफोर्ड। दोस्तों जल्दी से बता दो अगर नेट में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर B9 भाई नीड्स टू चेक हिज इंटरनेट फॉर श्योर, 100%, 1000%। साका की जगह तो रैशफोर्ड होना चाहिए था, साका की जगह रैशफोर्ड होना चाहिए था। वाई ब्रो, साका तो डिड ग्रेट, फिनिश सेकंड, वन ऑफ द बेस्ट। साका के स्टैट्स देख लो पिछले सीजन के, एक मिनट रुक जाओ, साका के स्टैट्स देख लो एक बारी। साका लास्ट सीजन भाई 14 गोल 11 असिस्ट, फिनिश सेकंड, एंड फिर अभी तो वो जीता भी है कुछ तगड़ी चीज। क्या जीता है वो, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड समथिंग लाइक दैट ही हैज वन, तो देयर इज नो डाउट भाई, 100% भाई। मेरे ख्याल से साका को तो आप नहीं हटा सकते, किसी तरह से भी साका को आप नहीं हटा सकते। ही शुड बी देयर एंड ही इज देयर। रोड्रिगो, रोड्रिगो इन प्लेस ऑफ साका नहीं भाई। वेयर इज क्रूज, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई। वेयर इज क्रूजू, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब बट वहां पर एक वो चीज आ जाती है, हमारा मेड्रिड बायस आ जाता है। बट क्रूज इन प्लेस ऑफ whom यार, सेंटर भाई। क्रूज किसकी जगह लाता तू, एक मिडफील्डर को हटाता तो किसकी जगह लेके आता, दैट इज द क्वेश्चन। हाउ द हेल इज साका इन बैलन डोर टॉप 30, आर्सेनल पीआर इज अनमैच्ड। नहीं यार, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है, मेरे ख्याल से तो 100% होना चाहिए था। नो डाउट, नो डाउट। मेरे ख्याल से भाई साका तो होना ही चाहिए था। साका से अच्छा तो मारियानो नहीं नहीं भाई, दैट इज वे टू मच। साका डिजर्व्ड इट फुल्ली, तभी वो आ रखा है यहाँ पर मेरे ख्याल से। तो मेरे, अगर मैं अपना टेक दूं तो हाँ, टर स्टेगन आना चाहिए, फॉर श्योर आना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं रियल मैड्रिड फैन तो ऐसा नहीं है, लेकिन टर स्टेगन का सीजन जो था वो कुछ ज्यादा फाड़ से भी बहुत ज्यादा फाड़ था, तो ही शुड हैव बीन देयर। ऑडीगार्ड, हाँ यार ना, ना भाई ना यार, ऑडीगार्ड तो अलग लेवल पे ही था। फिनिश भाई, 15 गोल 7 असिस्ट भाई। और क्या कहते हैं, और भाई सिंपल सी बात है भाई, अगेंस्ट मैन सिटी दे वर नेक टू नेक टिल द एंड भाई। एक मिनट, हाँ भैया, हाँ आ जाओ। 10 10 मैं तभी तो मैंने भेज दी थी आपको लिंक। आ जाओ। कमिंग रिप्लेस ऑडिगार्ड विद क्रूज, नहीं भाई। रोड्रिगो कोलू की जगह भाई, कोलू मुआनी वाज ऑन फायर ऑन अनदर लेवल, उसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों जितने लोग भी हैं जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो यार, जितने बंदे भी देख रहे हैं स्ट्रीम को लाइक करो, शेयर करो फटाफट, और लोगों को बुलाओ, भाईजनों को बुलाओ, क्योंकि ये स्ट्रीम ना भाई, मैं बहुत तगड़े क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंज है बैलन डोर में, और वो चेंज ये है कि तुम्हारी टीम ने कितने टाइटल जीते वो नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी इंडिविजुअली तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी उस पर ज्यादा फोकस होगा, मतलब देखा जाएगा। मतलब वही होता है ना, जैसे ड्यू में आप एडमिशन लो, अगर आपने लिया होगा, मैंने लिया, कि 10% वेटेज 12th के मार्क्स को होगा, बाकी उसको होगा क्या कहते हैं जो टेस्ट ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करके होता है, 3 4 चीजें होती है, ठीक है। तो वैसे ऐसा है कि 30% इज अबाउट योर ट्रॉफीज, 70% इज गोइंग टू बी अबाउट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो फिर इसके लिए तो कोलुमोनी होना बहुत जरूरी है भाई। उस बंदे ने हैड द मैक्सिमम जीए इन बुंडेस लीगा, नोबडी वाज क्लोज, और फिर वर्ल्ड कप में भी गोल मारा है। तो ऑडिगार्ड की जगह ब्रूनो या रैश भाई, हृदय भाई, हाउ, मतलब ऑडिगार्ड को यू कैन नॉट रिमूव भाई, फिनिश सेकंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर तुम स्टैट्स की बात करो, बीइंग अ मिडफील्डर ही हैड 15 गोल्स एंड 17 असिस्ट, दैट इज क्रेजी।
दैट इज क्रेजी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिटी भाई, हाँ मतलब प्रीमियर लीग में ही जो स्टैट है भाई के हैं, सॉन विल बी इन टॉप 5 ऑफ बैलन डोर नेक्स्ट सीजन 100%, 100% ब्रदर। आपके मुंह में घी शक्कर भाई। दोस्तों जितने लोगों को देख रहे हैं प्लीज लाइक करो, और जिन लोगों को नहीं पता मेंबरशिप आ चुकी है, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मेंबरशिप है, बेटा एम्बापे, पापा पेरेस एंड दादू फ्रैंको। तो यू हैव टू ज्वाइन इट, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो क्या ही किया भाई। हाउ आर आर्सेनल प्लेइंग फॉर गोइंग ट्रॉफीलेस? भाई ये बात तू क्या कहते हैं लिवरपूल के लिए भी बोल सकता है। ये बात तू काफी मतलब फैक्ट्स पे बात करने हैं, बायसेस बात करना, बायसेस हटा के। हाँ भाई फैक्ट्स पे बात चीत होगी अगर तेरे को लग रहा है कि मैं नहीं फैक्ट्स पे बात करता। व्हाट्स अप नितिन भाई, स्पिन फैक्ट्स आउट देयर आउट हियर। आपकी मुंह में खट्टी लस्सी की घी शक्कर के तो बातचीत नहीं है। मैं हैदराबाद आया हूँ आज सुबह। अच्छा जी, ज्वाइन द मेंबरशिप। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक कर दो। हाउ आर द आर्सेनल प्लेयर भाई? अगर तू ट्रॉफी लेस सीजन की बात करेगा तो काफी लोग हट जाएंगे। जयेश यादव भाई व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो काफी प्लेयर्स हट जाएंगे इसमें। कोलू मोनी को भी तू हटा देगा, फिर गार्डियोल तू बोलेगा वर्ल्ड का परफॉर्मेंस दिए भाई, क्या बात है क्या बात है, ठीक है। आप लोग किस किस को लगता है कि जमाल मूसेवाला बीइंग इन हियर इज जस्टिफाइड? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जमाल मूसेवाला बीइंग हियर फॉर वकार भाई व्हाट्सअप? बाय द वे 3 Real Madrid Bellingham feminine, 2 exist Real Madrid players, 1 new signing. Let's go भाई। हाला मद्रिद वकार भाई, हाला मद्रिद। भाई किसी को लगता है कि रियल मैड्रिड के कुछ और प्लेयर्स होने चाहिए थे, या फिर यू आर सेटिस्फाइड दिस इज जी, दिस इज डब्ल्यू, मतलब दिस इज द विन कि हाँ भाई सही है? या फिर आपको लगता है कि क्रूज इज द प्लेयर जिसको होना चाहिए था, ही डिजर्व्ड इट मूसेवाला? देखो अगर तुम जैसे स्टैट की बात कर लेते हो, जैसे कि साका पे तुमने बात करते कि भाई कि क्या स्टैट थे तुम्हारे, क्योंकि दिस सीजन ने जिस तरह बैलन डोर 12 गोल 10 असिस्ट है मूसेवाला का, तो वो वाली बातचीत है। बेलिंगम फॉर गोल्डन बॉय, no two ways about it. Kopa trophy 100%। Jude, the man, the myth, the legend, Bellingham भाई। नितिन भाई what's up यार, congratulations for 1K यार, congratulations for 1K। Thank you. Come on, let's discuss this dead trophy, dude. Let's do it. Let's talk about Sancho. Greenwood took it off. There's nothing to talk about, dude. He's gone. He's gone. Bye bye. Bye Nothing bye। to talk about. Bye bye. करीम की जगह क्रूज या रैशी होता। करीम बेंजेमा की जगह है। ये नितिन व्हाट्सअप भाई। नितिन भाई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये देखा नॉमिनीज, द 30 नॉमिनीज, आई फेल्ट लाइक दिस इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल। प्रणय भाई भी आ गए। चलो दोस्तों, तो बातचीत एवरीबॉडी इज हियर। रुको रुको मेरे को करने दो, सीखने दो अभी आप, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज हियर नाउ, तो भाई स्ट्रीम शुरू होने वाली है। प्रणय भाई वेलकम वेलकम। मैं देखो बैठा हूँ, पहन के बैठा हूँ सुई। दोस्तों टैकल फ्रॉम बिहाइंड, इफ यू रोनाल्डो फैन यू नीड टू बाय दिस, ठीक है। और अगर आपको सेंटियागो बर्नबेउ जाना है तो अब आप पालम भी आ सकते हो, बिकॉज माय होम इज सेंटियागो बर्नबेउ प्लेस, ब्यूटीफुल। मैंने इसे रखा है ऐसे क्योंकि नए घर, नॉट ओनली फॉर CR7, लाइक मेसी का भी है भाई, तो बायस नहीं है कोई भी। हाँ भाई मैं सबका है यार, जिसका मांगोगे उसका है। और मैं नए घर में जाऊंगा तब इसको लगाऊंगा। दिस इज ब्यूटीफुल। रियल मैड्रिड शुड साइन ग्रीनवुड एंड एंटनी। अभी हुणे 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 अभी करवाते हैं भाई। भाई तो दोस्तों मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्ट्रीम हम करना चाह रहे हैं, बड़े दिन से हुई नहीं थी, तो आज करेंगे वो, ठीक है। तो प्रणय भाई, नितिन भाई, मेरे को यही कहना है कि माय फर्स्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन वर कि भाई दिस इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल 30 नॉमिनीज। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई लड़का ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सभी ठीक है। बट फिर मैंने 2-4 वीडियो देख लिए, फिर मेरे को अब लग रहा है कि नहीं यार ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है। तो प्रणय भाई पहले आपसे शुरू करूंगा कि आर यू हैप्पी विद द 30? आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़े, क्योंकि नेतन भाई के पास तो एक नाम है उनका घर का दोस्त, जो वो बोलेंगे कि हाँ भाई ही शुड हैव बीन देयर, एंड मेरे को भी ऐसा लगता है। बट इन प्लेस ऑफ हुम, जैसे ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आर दीज 30 मतलब डिजर्व टू बी इन हियर? आई थिंक नाम वाइज तो मेरे हिसाब से कोई नहीं यार, बट आई विश अगर 30 के हिसाब से तो यार देन यू हैव टू लुक एट होलिस्टिक। अब मैं 11 प्लेयर मैन सिटी की तो नहीं बोल सकता भाई, देखो ऑब्वियसली अगर मैं नहीं, ये बहुत क्वेश्चन भी ज्यादा मेरा बायस कि हो जाएगा। और क्या आप मैन सिटी के प्लेयर को आपको लगता है कि मैन सिटी का कोई प्लेयर छूट गया? क्योंकि देयर इज अ सीन कि जॉन स्टोन शुड हैव बीन देयर, जॉन स्टोन्स को लेके, हाँ जॉन स्टोन्स को लेके मैं काफी वो हूँ। लोग स्टीव कार्सन को भी बोल रहे हैं कि भाई
टॉप 30 में होना चाहिए था उसको, द गोट कार्सन को, बट आई एम प्रीटी मच हैप्पी यार। आई थिंक अगर थोड़ा अनबायस्ड वे में अगर मैं देखूं इसको, आई एम हैप्पी विद द नॉमिनेशन। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नाम मेरे को नहीं लग रहा जो मिस आउट होना चाहिए था, लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक ठीक है यार अब ट्रेबल जीते हैं तो सिटी के प्लेयर्स में थोड़े और चाहता था, बट आई थिंक 30 के वाइज के हिसाब से आई वुड नॉट रिप्लेस एनी वन ऑफ द प्लेयर्स। मतलब कोई भी अगर आप प्लेयर नाम ले लो, आई थिंक ऑल ऑफ देम, मतलब जो भी हमने यूसीएल चैंपियनशिप वगैरह में भी देखा, सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी यार, चाहे तुम किसी भी प्लेयर का नाम ले लो उसमें से। तो या आई थिंक इट्स प्रीटी फेयर, नो नन ऑफ द नेम्स आई वुड रिप्लेस। मतलब जॉन स्टोन्स का भी था, बट अगर ये भी देखोगे यार लास्ट, मतलब ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में और जो भी उसकी कुछ गेम की परफॉर्मेंस थी काफ़ी अच्छी थी, बट टॉप 30 वाइज आई वुड नॉट रिप्लेस एनीवन यार। मतलब किम, हाँ मतलब किम को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट नो लाइक किम को लेके इतना ज़्यादा हुआ है, बट आई थिंक फेयरली अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं सीरिया के मैचेस देख रहा था तो उसको रेट करेंगे, बट इट हैज़ टू बी अ मिक्स बैक ऑफ ऑल द प्लेयर्स राइट। सारी लीग से आपको अगर प्लेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन। ना मतलब मैं ये मेरा स्टार्टिंग का वो था टेक कि भाई हाँ भाई सब बढ़िया सब बढ़िया। नितिन भाई यू यू वांटेड टू सी रैशफोर्ड 44 जीए लास्ट सीजन, ट्रॉफी जीती इतने साल के बाद, स्कोर 2 गोल्स इन द वर्ल्ड कप एज वेल, तो यू थिंक इन प्लेस ऑफ कोलू मुआनी? See, that's exactly what I was thinking. I was just going to go with what about Odegaard? If we are going to do individual performances, he can definitely replace Odegaard or Muani. For sure. Because at the end of the day, I was hearing you before I came on live. You said Arsenal were head to head with Man City. Sure. But at the end of the day, we finished 4 points behind them and we won a trophy. So, I mean, at the end of the day, Arsenal won nothing. And I heard that Saka thing, that PFA young player thing. Let's be honest. You know someone who's younger than Saka, but wasn't considered for it? You'd like to take a guess? I think Pranay already knows exactly where I'm going with this. It's Erling Haaland. He should have won both. So does Saka really win? If the guy meets the criteria of young player of the year and wins the whole thing, are you trying to tell me he's not young player of the year too? मतलब अगर रोनाल्डो ने किया था, गैरेथ बेल नहीं करता, आई गेस उन्होंने सब कुछ जीता था इन अ सिंगल सीजन, तो भाई मतलब हालैंड का मेरे को ये लग रहा था कि ही विल बी द थर्ड गाय टू डू दैट, बट ये राइटर्स चॉइस भी जीत जाए, प्रीमियर लीग प्लेयर भी जीत जाए, यंग प्लेयर भी जीता एंड डिजर्व्ड इट भाई। मतलब सब कुछ जीता उसने भाई, सब कुछ जीता, उससे ऊपर तो क्या ही, मतलब उससे ऊपर तो क्या ही है। बट मतलब प्रणय भाई क्या कहते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको इसलिए बुलाया बिकॉज बैलन डोर में यू हैव टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी डेफिनेटली, ठीक है, बट Ter Stegen is one name. मतलब I'm not a Barcelona fan. Everybody knows that. But by Ter Stegen equaling the record, clean sheet record of La Liga last season. मतलब सबसे ज़्यादा least amount of goal conceded in La Liga, top 5 European leagues. He is not there. Is a वो कि भाई यासिन बुनो, yes भाई World Cup great performance, won a Europa League with Sevilla, ठीक है. But Onana, do you think he has been that good for Inter Milan? Inter Milan finished third last season, okay, Champions League final reached, very good, congratulations on that. वही मेरे को लगता है वही एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि Ter Stegen fall out of the Champions League and the Europa, क्योंकि भाई वरना तो अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो, there is goalkeeping wise there is nobody who's better than Ter Stegen last season, to be very honest. क्या कहते हो प्रणय भाई? हाँ आई थिंक ओनाना के हिसाब से अगर मैं बात करूँ यार तो ठीक है। यार देखो बात ये कि इट इज़ नॉट न्यू, जब भी आप मतलब यार अगर मैं यहाँ पे अगर नितिन भाई की या फिर तेरी भी टीम बना दूंगा ना 11, अगर आप लोग भी अपनी परफेक्ट 11 टीम बना दोगे तो कोई ना कोई ज़रूर ये बोलेगा ही बोलेगा कि यार इस प्लेयर को क्यों नहीं इंक्लूड करा, क्योंकि सबके क्राइटेरियाज अपने हिसाब से मैच करते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ में डिबेट वही है कि इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग यू एज रॉन्ग, इट इज़ मोर अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ राइट। मतलब मुझे तुम्हारे ओपिनियन से उतना वो नहीं रहेगा कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर जयंत कोई भी, एंड आई एम श्योर कि अगर हम यहाँ पे 11 प्लेयर्स की टीम बनाने बैठेंगे तो हम तीनों के ओपिनियंस, शायद 1 2 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो प्रॉब्ली लाइक हालैंड जैसे प्लेयर होंगे जो आएंगे, बट उसके अलावा भी फॉर्मेशन वाइज काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ों में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप किस हिसाब से किसी प्लेयर को जज कर रहे हो। सेम थिंग गोज फॉर आई थिंक इंटर।
Onana ne Onana did a very good performance in the Champions League, and that's why because of him, they reached the finals. But unfortunately, हार गए. But his performances were very good, and that's why इस transfer window में आपने United को देखा कि भाई they let go of De Gea. मतलब De Gea के साथ उन्होंने verbal agreement वगैरह सब कुछ कर लिया था, but they were sure of. और वही है कि बहुत सारे लोग इसमें ये बोलेंगे यार, मी इनफैक्ट मतलब कि यार 4 गेम देख के आप ओनाना को ट्रोल कर सकते हो जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, बट अगेन 4-5 मैचेस में देख के आप किसी को भी इंडिविजुअली जज नहीं कर सकते सिर्फ उसमें. ठीक है, बैंटर असाइड, एवरीथिंग दैट इज असाइड, ओनाना इज अ वेरी गुड कीपर, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव आर यू लुकिंग एट. ठीक है, बोनो को अच्छा शाउट मिलना चाहिए था अगर आप वर्ल्ड कप के हिसाब से भी अगर आप देख के चलो, और सेविया को जिताया भी इनफैक्ट, क्योंकि मतलब लास्ट में अगर गेम जा रहा है तो यार इट वाज हिज हीरोइक्स एट द एंड, वी ऑल नो. बट ठीक है, just purely just based on the performance of Onana, I think he fairly deserves it. And yeah, I think वही है कि डिपेंड करता है कि किसको आप ऊपर रेट करना चाहते हो, किसको आप नीचे रेट करना चाहते हो. Really depends on what criteria आप किस हिसाब से मैच कर रहा है आपका प्लेयर. True that, true एंड that. मैथ्यू ने भी वही लिखा, ओनाना ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस वाज गुड. सो या आई थिंक आई एग्री, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा सीरिया के मैचेस देख रहा था बैठ के मैं, बट चैंपियंस लीग में मैंने जब भी इंटर को देखा, इवन अगेंस्ट एसी मिलान, इवन इन द Saved फाइनल, penalties. he did, he was pretty good. तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स फेयरली नॉमिनेट. मतलब वही है ना कि यार देखो, अगर यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरिजन हटा दें, 30 नाम या जो भी नाम आपको लेने हैं, आप कंपैरिजन हटा दें और आपको इंडिविजुअली एक प्लेयर की आप बस उसकी परफॉर्मेंस देखोगे पिछले सीजन की, यू वुड डेफिनेटली अग्री कि यार हाँ ये प्लेयर डिजर्व करता था. बट मतलब चीज़ें कहाँ पे कॉम्प्लेक्स होती हैं, अच्छा क्या ये प्लेयर इसके ऊपर डिजर्व करता था, दैट इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल मेसी. तो या Talking about Messi and Haaland, दोस्तों we will talk about Messi and Haaland. वो तो मतलब पूरी बातचीत होगी, ठीक है, उसको वो तो मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो है. बट एक नाम जो मिसिंग है एंड वेयरिंग उस बंदी की टी शर्ट, नितिन भाई, आई वांट टू आस्क यू, वाज लास्ट ईयर द लास्ट टाइम वी सॉ क्रिस्टियानो रोनाल्डो in the 30 man nominees of the Ballon Dor? I know it's a sad question, but what's your answer? Yeah, I think so. Yeah. Barring he somehow decides to come back to the top 5 leagues. Yeah. But even then he won't get nominated because it will be all his performance for the RSL. So yeah. He won't get nominated for next year, but he might come back and then following year. Yeah. Or the other thing is कि Al Hilal catches up with the other leagues, and मतलब obviously जब तक Sorry, Al Hilal Al is what? not Al what? Shut the fuck up, dude. Come Saudi on. league, Al Saudi league. Hilal. Get out, dude. Al Hilal. Sorry, Champions Saudi League wild card spot, No, dude. They don't even live in. They're not even in the same continent, dude. What do you mean? नहीं, What but ridiculousness, dude. Wild card नहीं, spot, but dude. फिर being optimistic, being a Cristiano Ronaldo fan, being No. being I very think very I very think if he moves to the top 5 leagues, I think you can't say it, but as it stands, मतलब I don't think so. Al Nassr, because मैं तो ये कह रहा था कि भाई the man who has scored the most goal in 2023 is not, but I know, मतलब दोस्तों, I'm not defending और ये वो, but मतलब ये surely 100% कि नहीं होना चाहिए था क्रिस्टियानो रोनाल्डो 30 मैन में, एंड उसका नहीं होना इन 30 मैन इज आल्सो अ रिकॉर्ड कि भाई 20 साल बाद इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो is not there. It was very very disheartening. Listening the Sue at the podium was something else. Pranay bhai, आप कुछ ऐड करना चाहोगे about this, because नहीं, आई थिंक लोग यहाँ पे आई नो लाइक लोगों को, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि यार ठीक है, एज एवरीवन इज अगर रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो जैसे ही नॉमिनेशंस आए थे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो, बट मेरे हिसाब से आपको सबसे पहली चीज़ उसकी देखनी चाहिए कि द मोमेंट ही जॉइंड अल नासर को, unless ठीक है, रोनाल्डो का फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि इन यूरोप माय टाइम इज डन. मतलब दैट वाज When he said something about it being a top 5 league, even I was like, "Come on, man! Like, what are we doing?" I mean, he here? said, I mean, Like Beckham left 10 years ago and said the same thing. Like, what are we doing? Like, what are we नहीं doing here? नहीं, लेकिन Like, जब seriously. बैकम नहीं, गया but I था think- और अब हाँ बोलो Pranay bhai. I think, but I think यहाँ पे ये चीज़ भी ओके, मतलब आई विल जस्ट फिनिश. मतलब दो चीज़ें कि पहली चीज़ की रोनाल्डो के नॉमिनेशन के ऊपर ही क्लियरली सेड कि यार माय टाइम इन यूरोप इज डन. सो रिगार्डलेस ऑफ अगर बैलन डोर का बायस हमेशा यूरोप को लेके ज़्यादा ही होगा, आप
इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अ, बस मतलब यार उसी चीज़ पे मैं बस बोलना चाहूँगा कि आई थिंक अगर रोनाल्डो का टाइम डन है, इफ ही इज़ सेइंग दैट इट्स डन फॉर हिम, देन इट्स डन फॉर हिम, ही इज़ लेफ्ट यूरोप फॉर गुड, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हो रही थी उसको रिगार्डिंग लेके, ट्रांसफ़र को लेके, he doesn't really care. He's already nominated 18 times, 19, 20, 20, 21, 20 कभी ना times. कभी हाँ. तो रुकना ही है। मतलब जितने बार भी कर लो, it doesn't really वो, ठीक है। After 20 years, तो मतलब this is also a record. 20 साल बाद. हाँ, तो यार वो तो कभी ना कभी होना ही था ना। लाइक इस साल भी अगर वो 30 में जाता तो क्या पता अगले साल नहीं होता। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रोनाल्डो एनीवेज ही इज हैप्पी इन सऊदी अरेबिया एज फार एज जो भी मैं उसका देख रहा हूँ, एंड आई थिंक सेम थिंग गोज इवन फॉर मेसी। जो भी चल रहा था यूरोप में, हम सब फैंस वाइज हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर रहे थे, बट दे हैव लेफ्ट इट फॉर गुड यूरोप. For them, I think for them, both of them, it really doesn't matter. They have already won it a lot of times. They've dominated the podiums, मतलब more than any player. और आगे भी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ऐसा उनके जितना डोमिनेशन कोई और कर पाएगा. Like maybe like in 20, 30 और 40, पता नहीं, अगर कुछ कभी, you never say never in sport. बट रिगार्डलेस जो हमने देखा है, हम तो उसी चीज़ को बोलेंगे भाई, जो हमने देखा है हर सीजन, हर ईयर हमने सिर्फ जब व्हेन आई वाज, मतलब आई एम श्योर हम सब ग्रो कर रहे थे, हमने सिर्फ मेसी और रोनाल्डो को ही पोडियम पे देखा है, फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट पे. तो दैट इज ऑलवेज बीन देयर. नाउ कमिंग ऑन सेकंड थिंग, आई जस्ट कंक्लूड ऑन दैट कि ठीक है, ही सेड इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि यार उसको टॉप 5 लीग बनाना है. एंड आई थिंक ही न्यू समथिंग एट दैट टाइम, बिफोर जब ये सारी ट्रांसफर्स भी हुई, दैट व्हेन ही वाज बिकॉज ही वाज द वन हु ब्रेक द आइस. मतलब दैट ट्रांसफर लिटरली क्रेव, मतलब एक तरह से वे उन्होंने क्रिएट करी अपनी उस चीज़ में, कैसा है. सो दैट्स गुड. एंड आई थिंक आगे आई वुड स्टिल से कि यार जो लोग अभी भी इस चीज़ को ऐसे बोल रहे हैं कि यार सऊदी अरेबिया टॉप 5 लीग में नहीं आ सकता, आई थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक Ignore the reality. मतलब हाँ, आ सकते हैं. इग्नोर द रियलिटी भी नहीं, मतलब इट कैन नॉट, मतलब इट्स 50-50. डोंट से कि यार ऐसा हो नहीं सकता. People said a lot of things when Ronaldo moved there कि यार किन डिफेंडर्स के साथ खेलने वाला है. Now Saudi has bought almost all the top European talents, young players भी, old players यहाँ भी. जा रहे हैं. तो ओटावियो गया है. मतलब सारे ही गए यार, मतलब हाँ. मतलब अब टॉप हाँ. 4 जो सऊदी वाले क्लब्स हैं, उसके अलावा भी अब मैंने उसमें देखा था, आज ही की न्यूज़ है, वो उसको लोन आउट करा है, और भी बहुत सारे क्लब्स आ रहे हैं जो सेंचो कि गया. लोन आउट डन डील है. हियर व्यू. नहीं, सैंचो नहीं यार. दे लोन्ड आउट वन प्लेयर. आज ही की न्यूज़ है यार कि किसी और, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा. आई थिंक कोई एक प्लेयर था यार, चैट में मेरे को बता देना यार कि क्या उस प्लेयर का नाम है. ही साइंड फॉर सऊदी क्लब, एंड आई थिंक आफ्टर प्लेइंग 3 गेम्स ही गॉट लोन्ड आउट टू सम अनदर सऊदी क्लब 3-4 मैच के बाद. आज या कल की न्यूज़ है. तो या सो रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई थिंक पीपल हु आर सेइंग कि यार टॉप 5 नहीं हो सकता, जस्ट वेट एंड वॉच. आई थिंक पैसा है भाई सऊदी के पास, वी ऑल नो. आपको 5 साल बाद कुछ और दिख जाए, तो आई वुड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी. आई वुड नॉट से कि यार डिल्यूजन में मैं नहीं बोलूंगा कि यार टॉप 5 लीग नहीं बन सकती, ठीक है. एट द करेंट स्टेट प्रॉब्ली नॉट, बट इन 5 years यू नेवर नो. इट्स जस्ट दैट. और मतलब वही है, सिर्फ प्लेयर्स भी नहीं, मैनेजर्स एंड एवरीबॉडी इज मूविंग देयर. तो फिर काश एक बार रोनाल्डो के लिए भाई, प्लीज सू मी. बट नेवरदलेस भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. बट एक मैं अभी आया हुआ है कि मूसे वाला डिजर्व्स द गोल्डन बॉय, नॉट द ब्रिटिश पीआर. आउच. बहुत बड़ा आउच भाई. He's the They carrier won of the my league team on the right now. last. They won the league on the last day, dude. Come on. Like seriously, come on. Like अगर हम कोपा ट्रॉफी की बात करें तो मेरे ख्याल से तो इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल एट ऑल. इट्स वन साइडेड. क्यों नितिन भाई, डू यू थिंक द कोपा ट्रॉफी, मतलब एक बार मैं नॉमिनीज बता दूं सबको. देयर इज जूड बेलिंगम 20, रास्मस हॉलैंड 20, Alejandro Balde 19 from Barcelona, Gavi from Barcelona, Musiala Bayern, Eduardo Camavinga the goalkeeper, the striker, the midfielder, the left back Left from back. Real Madrid, Pedri from Barcelona, Xavi Simons PSG, RB Leipzig, Antonio Silva, क्या बात है, ये तो अगले साल भी आएगा, and Ali Wahi. ये हैं सारे नाम. I think it's one-sided. Nathan bro, Judy. I mean, I would give it to Pedri, but Pedri, well, nothing against Pedri, but Pedri was mostly injured. Like, bro, okay. listen, man. As a team that beat Barcelona last season,
But seriously, I would get to Pedri. I think Pedri, maybe Kamavinga, because of his individual performances in multiple positions. He turned out to be quite a crucial player for the whole season. It would turn out to be mostly out of position, which I think should give him extra points personally. Although, let's be honest, FIFA is not going to do that. So, yeah. भाई मतलब शेल शॉक जो अंदर से ठीक है अरे वो जो बट क्या प्लेयर आपने का नाम ले रहा था दैट वाज रोमन साइस। वो उसने अल शबाब Nice. ऑन लोन से अल साड से उसने साइन करा। हाँ, या हम्म, या इट्स सो ये चीज़ है। मैं वही सोच रहा था यार, मैंने कहा कौन सा प्लेयर है यार जो जिसका मैंने पढ़ा था परसों की न्यूज़ है, सॉरी। हाँ रोमन साइस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डू यू एग्री विद नितिन भाई और मतलब इट्स क्लियरली जूड बेलिंगम मतलब ग्रेट गाय ग्रेट द guy was the How is that? best How is that agreeing with me? I didn't say Jude Bellingham. but मैं तो उसको वो काम है ना कि आई एम शेल शॉक्ड बाय यू नेवर सेड जूड बेलिंगम but agreeing with me agreeing with the world Jude Bellingham did a great job in the World Cup Yeah. I guess मेरे हिसाब से तो and पिछले In the साल World Cup, let's not do that, dude. Bhai, please, I bhai. don't want to Come talk on, about bhai. anything England related. Please, I'm begging you. Please, just let's प्रणय not भाई do it. आप बता दो आप बोल दो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोल दो भाई चंद भाई तू गलत है जूड बेलिंगम इज नॉट द क्लियर विनर आप बोल दो नहीं मुझे तो वो कुछ नहीं है शर्म नहीं नहीं भाई, ही इज द क्लियर विनर भाई। guys once again But the question is he going to win it? yes Think definitely so? definitely You really think so? 100% एक मिनट रुक जाओ भाई ने काउंटर दिया है क्या है भाई अरगदीप भाई तू बस बोल दियो कि टीसीएसबी ने बोला है तो टीसीएसबी 10 लिख देगा दैट इज आल्सो कूपन कोड ठीक है फॉर जर्सी आउट हाउस से तो वो कर देगा तेरे को वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दियो तो भी हो जाएगा Okay, मैंने काउंटर दिया है while you're checking Mayank's team, I have to ask दिख नहीं रहा मुझे Pranay something. I messaged him on Twitter when I found out that I didn't know he's in Istanbul. So I will finally get a chance to ask you, how was the atmosphere inside the stadium? I mean, बताने की जरूरत नहीं है यार। No, It was but like good, man. for some, in the perspective of someone who's not like gone to a stadium with that kind of stakes, you know. I mean, Plus, personally, I think, you're not a neutral. You're supporting a team, so you're going there because yeah. your team's there as well. So I mean, in terms of like stadium atmosphere, तो मतलब और भी मैं stadiums and I watched matches, but I think yeah, like that particular game in stake and everything. हाँ यार, मतलब मेरे को 2-3 बार सपने में भी आया है, like I won't lie, like honestly, like जब मैं ऐसे देखता हूँ when I see pictures, like there's one picture also which Man City has tweeted, उसमें like मैं छोटा सा हूँ एकदम कोने में, like when you zoom in like 20x, तो like I'm just celebrating a goal. So whenever like they posted like 2-3 times, so that feels good, man. And honestly, like मेरे लिए like उसके बाद like for one or 2 months, even like I'll be very honest, like after winning that and just celebrating it, मेरे को ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे excitement नहीं है, but you know it's more like कि यार अब जीत लिया, you know, like it's अब जीत लिया, तो I am just not like I'm not very impulsive with all the decision कि यार कुछ भी हो रहा है, although like transfers हुए उसके बाद बहुत सारे players गए, I'm just help like ठीक है 3-4 को हमने रोकने की कोशिश करी, but ठीक है जैसा भी है, but overall I think at that moment that feeling of winning the treble, that was like something very else. मैं तो यही बोलूँगा यार, मेरे लिए तो और क्या ही था, like for me achieving seeing Man City Makes live the sense. treble was like the ultimate dream. There's nothing else I could have ever dream of. तो अच्छा है यार, मतलब atmosphere was also very good. The moment like the full time whistle blew, like I was interacting with a lot of other Manchester fans. बहुत सारे, और like when I was even in the you know hostel, I was sharing rooms with mixed bag of people, some people from Manchester, some from Inter Milan fans. तो काफी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है. It was, I would probably say कि यार एक बार सबके बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए कि एक
just go and watch just one game. It's very beautiful. Like to experience that is very beautiful. चाहे वो बड़ा मैच हो छोटा मैच हो, it doesn't really matter. But yeah, just definitely do it. Balde won Nations League and La Liga in his breakthrough season, became the starter. Many crucial performances for Barcelona. Was a key player. मैं agreed भाई Balde was मैं also great. और मतलब जीते कोई भी, देख उसमें वो बात नहीं है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं बेलिंगम के लिए ब्रिटिश पीआर है और मूसियाला को जीतना चाहिए, मूसियाला उतना ही जर्मन है जितना मैटी कैश पोलिस है, ठीक है। मूसियाला इज एज ब्रिटिश एज इट गेट्स, ठीक है, तो उसके साथ भी कोई ऐसे अलग पीआर नहीं है, मूसियाला को उतना ही सेलिब्रेट करती है ब्रिटिश पीआर, तो प्लीज नो वरीज। और भाई बेलिंगम के बाद में भाई जिस तरह से बोला गया कि इस बार बैलन डोर विल बी मोर ऑन कि भाई तुमने क्या परफॉर्मेंस दी इंडिविजुअली रेदर देन ट्रॉफीज, मतलब 30% और 70% ऐसा बांटा गया है। लेट्स सी क्या होता है, वो तो फाइनल डिसीजन में पता चल जाएगा कि किसको मान रहे किसको नहीं मान रहे। बट अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जूड बेलिंगम इज 15 गोल्स एंड 7 असिस्ट, और भाई लास्ट डे पे ही वाज इंजर्ड एंड बुंडेसलीगा वाज डिसाइडेड ऑन द लास्ट डे। मतलब जिस तरह से हगा है डॉर्टमंड ने, वो डॉर्टमंड ही जाती है और कोई भी नहीं बता सकता। एंड देन कमिंग दिस सीजन भाई एंड विनिंग लाइक so many मतलब 4 out of 4 for Real Madrid, 5 goals, 1 assist, 3 man of the match, 1 La Liga player of the month in the same league as Balde and Pedri and Gavi and Camavinga and all the other stars. I think मतलब मेरे ख्याल से तो जूड बेलिंगम। तो भैया हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, जूड बेलिंगम? नितिन भाई आप बता दो एक आंसर। See, honestly, जूड बेलिंगम किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे? स्टैट्स सबसे तगड़े उसके 15 गोल 7 असिस्ट है Stats. किस बेसिस पे? that's रोड्रिगो नहीं है उसमें? रोड्रिगो नहीं है, रोड्रिगो 23 साल का हो गया भाई। listen, man, लेकिन आप I take Balde or Bellingham, but if they go by league difficulty, then I have a feeling it's going to go to Balde. Bro, you'll be the only one there, dude. You'll be the only one there. Mark my words. You'll be the only one there, dude. You'll be the only. No, you will be the only one there. I agree with He's not Nitish. going anywhere, brother. He's going nowhere. No, I agree मतलब- with Nitish because end of the season नहीं उससे पहले ही होगा. I agree भाई. भाई ये हो गया कंट्रोवर्शियल। विवरान भाई से मैं एग्री करता हूँ भाई। मूसे वाला He will be there. मतलब मूसे वाला की अगर आप बात करो तो मूसे वाला मतलब ऐसा नहीं है कि फारफेच ड्रीम है मूसे वाले के लिए भी, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में एवरीबॉडी रिमेंबर्स स्पेन वर्सेस जर्मनी, अच्छा खेला था लड़का। उसके बाद अगर सीजन की तुम स्टैट्स देखो तो डबल डिजिट में उसके गोल्स हैं और डबल डिजिट में असिस्ट भी है। एंड ही हैज वन ऑब्वियसली जो बुंडेसलीगा जीतते हैं, ऑब्वियसली बायर्न हर साल का ही है उनका, तो जीत ही गया वो, तो मतलब उसमें तो कुछ वो है ही नहीं। लेट्स सी भाई, मेरे फॉर मी इट्स जूड बेलिंगम। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दो कि हु इज गोइंग टू विन द कोपा। भैया यासिन की बात करें या सीधा उस पे इस पे आप बात करना चाहते हो? आप आए हो क्योंकि मैं चाहता था कि सपोर्ट करें हालैंड को। आप मुकर मत जाना कहीं, आप बोल दो कि नहीं भाई हालैंड नहीं जीतेगा। प्लीज डोंट डू दैट। बट बताओ यासिन ट्रॉफी बात कर लेते हैं जल्दी से। नितिन भाई यासिन ट्रॉफी नॉमिनीज बता देता हूँ। वैसे नितिन भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा आपने ये खुद, मतलब आप ऑनेस्ट आदमी नहीं हो, आपको बोलना चाहिए था कि भाई रासमस हॉलैंड का होना कुछ बनता नहीं था इस ट्रॉफी में। मतलब 4 goals or 3 goals. No, it doesn't make sense. वैसे रासमस हॉलैंड क्या कहते हैं, आपको अच्छा लगा नितिन भाई? He'll come through, yeah. He'll come through. Just based on what we saw in with the Arsenal game, if the trajectory continues that way, he'll come through. Not very worried really. प्रणय भाई आपको ऐसा लगता है कि rest- मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हॉजुलैंड इसलिए खरीदा क्योंकि उसका नाम राइमिंग है and they think something of that You sort know what's the might sad happen. part? The For sad the part is for right. the memes, yes. For the memes, The yes. sad but part we- is no. It's like he has actually sat down and explained the spelling, and the pronunciation's actually Hoylun, and you don't pronounce the D. Yeah, he's actually there's a video of him telling crowd that's how you actually say my ये तो name. एक और मीम बन गया, मतलब ये तो मतलब क्रेजी है। No, the meme is no one actually knows how to say his name, even though there's a video of him saying the name, dude. There's a video of him doing a press release. He asked everyone sitting there, does anyone know how to say my name? I guess they were all English. Then people were too scared to say anything, so he just told them his name.
They were too scared, though. They look like fools if they say the wrong thing. So he pronounced the name. There's a video, yeah. The video of him sitting and pronouncing. It Ter doesn't make any Stegen, difference, but Ter Stegen was great record clean sheet. If it's about performance, then Ter Stegen is clear. He won La Liga for Barcelona. He's talking about the Yasin Trophy. दोस्तों यासिन ट्रॉफी के हैं आपने डेब्यू दी थी जो वर्ल्ड कप की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ही वाज गुड आफ्टर द वर्ल्ड कप yeah. Say that part. Say that part. That part I want to hear because I think you know what I'm going to say after that. Say that part after the World Cup. What happened? then there is Nothing happened. Dude. then there is Mike Magnan from AC Milan. Then there is Thibaut Courtois, who's unfortunately injured, the best keeper in the world. Real Madrid, Aaron Ramsdale from Arsenal, Yasin Bunu from Al Hilal, Saudi guys coming in the Yasin Trophy nominees. Shut up, you all. ठीक है तो ये कह रहे हैं ठीक है फिर Andre Onana is there, Dominic Livakovic Croatia, Marc Andres Ter Stegen Barcelona, Anderson Manchester City, Price Samba Lens, straight up run है भाई. Anderson deserves it. Treble winner. I Crazy mean, Champu. I mean, मतलब यार I'm still not very much convinced just because बाकी nominees वैसे हैं, but just on that performance I think Debu should win it. I think Debu should win it. He will win it, I'm telling you for sure. World Cup nostalgia. हाँ No, मतलब I that's think the only thing it's the only thing it can be. It can't Yeah. be anything else. yeah that's just one thing. But I think अगर वो भी हम ना देखें तो I think ठीक है यार, मेरे को पता है कि when you will see it I think it's gonna be Debu. I would fancy Ederson winning it, but I'll only just fancy. I don't see Ederson winning it actually. So that is that. मयंक मतलब अरोड़ा मेरे को भाई तो लगता है पूरी कि उल्टी बात कर रहे हैं. मैं तो भाई इन दोनों में से नहीं हूँ. कम ऑन, आई एग्री विद दिस भाई. कम ऑन, मार्क आंड्रेस ter Stegen वाज द बेस्ट कीपर इन 2023. और मैंने ये बात कही थी, कोई कह रहा था कि आपने ला लीगा का नहीं भाई, 5 यूरोपियन 5 लीग में ही वाज द बेस्ट, लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड, सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स, मतलब मेरे ख्याल से तो भाई मतलब आई थिंक इट्स ter Stegen. एडरसन यस भाई, मेरे ख्याल से कि भाई ट्रिपल विनिंग वो है, बट परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, एक परफॉर्मेंस पे अगर आपको हो तो मेरे ख्याल से ter Stegen इज द गाय, बिकॉज ना सच में काफी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल सेव कर रहे हैं. ही इज द रीजन व्हाई द बार्सिलोना डिफेंस इज आल्सो एप्रिशिएटेड अ लॉट. मतलब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, बट एडरसन अभी पिछले मैच में भी उसने बहुत ही तगड़े सेव करे हैं. तो ter Stegen Question: Do you agree with this list? who is missing? Wait, don't you think De Gea should go above Ramsdale and Samba? The golden glove winner of that league, just in case like anyone's wondering. I'm just at least you think Samba should be on the list? सांबा के स्टैट चेक कर लेता हूँ. सांबा की तो मेरे को लगा हमने बात ही The golden glove? Did he win the golden glove? मेरे को ऐसा लग रहा है. Is that why he's here? Because the PSG goalkeeper is not here. Whoever it is, that tall Italian giant. Donnarumma. My God. Brace Samba ही है ना गोलकीपर. Lounge. भाई 4 गोल इस सीजन की बात करूं तो इस सीजन का देखते हो तो कभी भी नहीं. 4 मैच में 10 गोल्स कंसीडर्ड है भाई. ब्रीस सांबा. It's all crap, dude. It's all crap. Yeah. Like seriously. पिछले सीजन का देखिए. Bro, if Ederson or ter Stegen don't win it, this fucking thing's rigged also, dude. It's the same shit everywhere, bro. It's like goalkeeper, young boy. Everyone thinks only Ballon d'Or is rigged, dude. This is just as rigged, dude. All of them are just as rigged. Last season, Bro, 15 clean sheets. Who will tell me Bryce Samba did better than David De Gea as a whole season? 15 clean sheets. Yeah. 17 clean sheets, right, De Gea? On your face, ऐसी वाली बातचीत. 17, yeah. Like, come on, man. Like this is bullshit, dude. This thing. The Golden Glove winner for the league is not in this list, dude. And the guy who won nothing is on the list. And the guy who won nothing is on the list. I mean, come on, man. Like, whatever. I agree. Like, this is all crap, dude. If Ederson or ter Stegen don't win, this is another rigged trophy, Good. dude. Like, it really won't look good because I think मेरे हिसाब से I think De Gea should have been nominated.
मेरे हिसाब से भी आई थिंक डेहा तो नॉमिनेट तो होना ही चाहिए था यार Bro, रिगार्डलेस this has been चाहे happening जितना भी when he was our player of the year, dude. This has been happening. It's like it's not even worth it anymore. या Not even worth it anymore. भाई 7 पास टीम तो ठीक है, फिर ऐसे तो टर स्टेगन ने 4 खाए थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उससे कुछ मतलब क्या होता है, मतलब उससे कुछ नहीं होता ब्रदर। भाई मैं अच्छा चलो छोड़ो क्या पता ना क्या नहीं बोलना नहीं चाहोगे नहीं सिटी I के साथ 6 भी बोलो नहीं 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 I आप बोल don't दो if I नहीं I prefer Brother, you're not to talking speak. about one game. If you take away the City game and the Liverpool game, we are one goal away from having the best defense in the whole league. We're talking about one game. We're but talking about the whole unfortunately season. 17 clean sheets. You can't just pick one game and tell me Bryce Samba and Aaron Ramsdale's better. The maths doesn't add up, unfortunately. Just if you're going to नहीं, make लेकिन that प्रणय point. भाई जो आप कह रहे थे मैं सुनना चाहूंगा प्लीज, मतलब नहीं 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 भाई if I say something I'll be in big trouble guys नहीं so नहीं I तो भाई prefer एक not to No, speak. no, say it. Yeah, बोल दो यार क्या हो गया। I've already made it clear. If Ter Stegen or Ederson don't win, this is another rigged. So whatever you say will not trump what I've just said. Because Yeah, I know saying that. who's going to win. So I think but मैं भी वही बोलने वाला था I think यार मेरे हिसाब से like even for Ederson I think okay so again ये मेरा perspective के हिसाब से मैं बता रहा हूँ I think like De Gea again like when we are talking about goalkeepers we also need to like एक perspective ये भी देखना पड़ेगा कि what defense they are like what defense is in front of them. Now with Man City you have the best fucking defense of Europe मतलब तुम्हारे पास सबसे बेस्ट डिफेंस है तो उतने में अगर मतलब वही चीज है ना कि तुम किस डिफेंस के अगेंस्ट भी तुम खेल रहे हो, तुम्हारे पास बॉल आई नहीं रही जब वहां तक तो ऑब्वियसली तुम करोगे उतना उतना सेव तो तुम करोगे या उतने तुम्हारे स्टार्ट्स अच्छे होंगे. सो आई थिंक जस्ट फेयर प्ले टू एडिसन. आई थिंक ठीक है. आई थिंक मे बी ही इज नॉट टेस्टेड इनफ जस्ट बिकॉज द डिफेंस इन फ्रंट ऑफ हिम इज टू गुड. And Ederson, sorry, De Gea for me, and when you look at the United defense पिछले season का, I think मेरे हिसाब से I think De Gea could have kept more clean sheets if they were better, if there was a better defense put in exactly. front I of was him. just going to say our defense was rotated the entire season and he still made 100 saves मतलब and 17 clean सेंटर sheets. बैक पेयरिंग्स भी नहीं हुई, इंजरीज भी बहुत चल रही थी यूनाइटेड की. So I there did was a the lot stat of with I did the stat Pranay before this season started. De Gea saved yeah 101 saves and Edison yeah saved 52. But yeah but at the end of the day, it's a defense because people were saying De Gea had a better defense. That's how he won the clean sheet. I'm like, bro, he made double the saves Ramsdale and Edison made. What are you talking about? correct Our back correct four were correct not fixed the entire season at all. Like if you don't like De Gea because he doesn't pass from the back, that's cool. But don't make up yeah. your own agenda which does not exist. So भाई see, man, I I'm mean okay. I'm same okay with same it because at the end of the facts day, he's not going to win it. But it just feels like it's a constant snub for his lifetime of hard work. That's it. भाई yeah Like, and भाई इसीलिए मैंने जब बोला I think when I started off I said कि यार I think when you see that is where you have to draw a line and this is where like there are two different perspective आपका क्या है and this goes for even Messi versus Haaland debate कि आप क्या ज़्यादा वे कर रहे हो. अगर आप बोल रहे हो कि यार ट्रॉफीज किसने जीती, अगर आप सिर्फ वो वे कर रहे हो कि यार ट्रॉफीज किसने जीती और कितना उसका कंट्रीब्यूशन था, तो आई थिंक उस वे में फिर एडरसन को आप ले लोगे कि यार एडरसन ने तो ट्रेबल जीता है and he has done fairly well UEFA Champions League all of that and fairly like if I'm saying individual ways में यार एडरसन was मतलब चैंपियंस लीग में तो भाई वी नीडेड हिम द एंड सी एडरसन को सिर्फ आप सेव के उससे मत बोलो. there's another perspective, another layer to it. Ederson is like a proper defender हमारे लिए. He's not a goalkeeper. And if I like उस चीज में थोड़ा in depth पे नहीं जाएंगे. But Ederson का role at Man City is fairly very different. He is not there to only make saves. He is also to distribute balls. उसको वो first person है ball carry करने वाला. तो I think वही है कि आप किस perspective से देख रहे हो, ट्रॉफी के हिसाब से देख रहे हो, उसका उस हिसाब से देख रहे हो, तो I think fairly wins it. But again जिस अगर contribution wise देख रहे हो, saves wise देख रहे हो, proper goalkeeper saves, तो I think either it has to मतलब है तो नहीं, but I think डीबू को होना चाहिए just because of again जैसे मेरे को जयंत ने बोला भाई वर्ल्ड कप नॉस्टैल्जिया कि भाई जो भी पेनल्टी सेव्स हुई और जिस तरह वो जो सेव करा आई थिंक दैट सेव इंडिविजुअली शुड Kolo Muani just give him the and the Yashin and the just give him the golden glove already. Yeah. and that miss should tell us कि Kolo Muani doesn't deserve it.
in the 30. अच्छा साले भाई how hard मतलब it is मतलब हर मतलब कोई ऐसी रात शायद ही होती होगी जब वो उठ सपने में नहीं आता होगा that means मतलब being कोलू मोहानी is very tough right now मतलब यही सोचता हूँ कभी कभार कि भाई very tough दोस्तों मैंने अभी तक बोला नहीं है but जितने facts अभी नितिन भाई ने बोला और प्रणय भाई ने बोला you should subscribe to their channels भाई नितिन भाई का अभी मैंने लिंक दिया था टैग और टाइटल में हमारे प्रणय भाई के नए चैनल का भी दे रखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल्स लाइक द स्ट्रीम दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं करी है ऑलमोस्ट 80 पीपल आर वाचिंग अस फटाक से लाइक कर दो और क्योंकि अब हम आने क्लाइमैक्स में पहुंच ही गए हैं मतलब वी आर देयर टॉप 10 की बात करेंगे देन टॉप 2 तो भाई डिसाइडेड ही है प्रणय भाई टॉप 10 नितिन भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई प्लेयर नहीं है इन द वो ये कोई है ओनाना इज देयर Onana. दिस इज मेरे को तो ये बोलते वक्त बड़ा वो लग रहा है कि भाई this is bad this is sad but let's talk about the top 10 We don't deserve to be on the short list. Yeah? I don't think it's bad at all. Rashford I mean, see, listen, I've already made that argument, but then like that, then there's like 3 Arsenal players that shouldn't be there. So it's fine, man. It's like whatever. Again, it's one of those things. Makes no difference really. तुम्हें क्या लगता है अगर एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो वो अगले सीजन कैमरून के साथ खेलेगा ओनाना एक्स एम्बापे लिंकअप विल बी क्रेजी भाई अगर भाई ने एक सपेरे का नाम लिया ही है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा भाई मतलब एम्बापे तो वो इस साल देखेगा जब कि हालैंड एंड मेसी ऑन द पोडियम डू यू थिंक एम्बापे विल बी द थर्ड गाय ऑन द लिस्ट और यू सी केविन डी ब्रुयने फिनिशिंग थर्ड who's going to be the third? I think KDB will be on third, yaar. I think KDB should be on third. Yeah. But again, individual performance के हिसाब से आप उससे वो कर सकते हो मेरे हिसाब से तो I think KDB should be on third. क्योंकि किलियन एम्बापे वर्ल्ड कप नॉस्टैल्जिया yet again स्टॉक अगर देखो आपको बात होनी चाहिए बातचीत होनी चाहिए यार मतलब उस चीज के बारे में बात होनी चाहिए बट हैट्रिक इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप यार वो भी बात है वेरी टफ टू से अब मैं वही है ना कि मैं सिर्फ केडीबी के अगर बारे में सोच रहा हूँ तो भाई केडीबी एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फाइनल ही हैज डन एवरीथिंग ठीक है ही वाज द गाय हु बिकॉज ऑफ हुम वी वर इन फाइनल ठीक है फाइनल में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ट्रैक रिकॉर्ड उसका कुछ खास नहीं है फाइनल में बट रिगार्डलेस ऑफ दैट बिकॉज ऑफ हिम वी वर देयर राइट दैट इज वन पार्ट एंड ऑन द अदर साइड यू हैव एम्बापे ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस उसने इंटायरली वर्ल्ड कप फाइनल में और आई थिंक इवन फॉर एवरीथिंग हमें पता है यार तो वो ये चूज करना काफी डिफिकल्ट होगा बट मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा आप यही बोलोगे यार आई थिंक इट हैज टू बी अ बिट ऑफ मैन सिटी बायस हियर आपको जो समझना है आप समझ लो आई थिंक फॉर मी इट इज केडीबी एज थर्ड नितिन भाई मतलब डू यू थिंक इफ हालैंड फिनिशेस फर्स्ट देन केडीबी थर्ड इफ मेसी फिनिशेस फर्स्ट देन एम्बापे थर्ड क्योंकि देन इट्स वर्ल्ड कप वो और अदरवाइज इट्स who finishes third should be Rodri because Rodri puts the final nail in the coffin for what is the historic year for Man City. If we are going to go by Mbappe's losing hat-trick, then a winning Champions League final goal has to count. Hey, how many Champions League Mbappe has? How many? How many Champions Leagues Mbappe has? That's how many, dude. That's how many. Hands in his pocket. Zero. Because he never went to the best club in this world. What are you talking about, dude? He plays for the best club in the world. It's the only club with unlimited money. Buildings, hotels, Airbnb. Next year we will. I'm pretty sure by the way Haaland has started this season as well. Already have scored a hat trick. कितने गोल मार दिए भैया अभी उसने 3-4 मैच में कितने मार दिए भाई हालैंड ने अभी देखता हूँ इस सीजन में 6-7 तो मार ही दिए होंगे नहीं मारोगे तो आई एम डिसअपॉइंटेड हालैंड व्हाट आर यू डूइंग 6 गोल लेट्स गो 6 goals already 6 goals already so the way things have started again Mbappe next year will be crying and this way and Haaland will be on the podium for sure 100% मेरे को नहीं लगता कि भाई किलियन एम्बापे सेम नंबर यूनाइटेड हैव वॉन इन लास्ट 6-10 years
Oh my God. Suryansh bhai. Oh no, who gives a shit? We still have we have UCLs. Oh no, you've hurt my feelings. Oh God. Thanks, man. Cool. What's that got to do with this season? Nothing. Thank you. Ballon Thank had you. a history of World Cup performance. If they don't do it again, then the award is biased. नहीं मतलब if you talk about World Cup history, there has been n number of मतलब World Cup where the World Cup winner जो टीम थी उससे किसी को नहीं मिला. You talk about the 2014 season, nobody मतलब from the German मतलब is what Cristiano Ronaldo. Then you talk about वो Shouldn't Spain. Ribery have won in 2013? हाँ मतलब ऐसे कुछ था. एंड 2014 में मुलर था, मतलब मुलर कह रहे थे या फिर नॉयर कह रहे थे मेरे ख्याल से कि उसको जीतना चाहिए बिकॉज दे वॉन एवरीथिंग. 2010 में स्पेन वॉन द वर्ल्ड कप बट मेसी वॉन इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेसी Oh, वॉन इट and 2018. that was first ever World Cup, and it was, I believe, it was Messi, Xavi, and Iniesta, and Xavi and Iniesta should have won that. Messi shouldn't have been on that podium that year. I don't even think he should have been on the podium that year, genuinely. Because if you're going by history and all this, if Spain wins the historic thing plus Barcelona's success, it can only be Xavi and Iniesta. It can't be Messi. Unless Messi gets bonus points for being teammates of Spanish players. 2000 नितिन भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो बट honesty is the best policy. Are you trying to tell me when Spain won the World Cup he should have won it? आई एम गिविंग द एग्जांपल जिसमें मतलब जैसे कि भाई ने अभी कहा कि भाई जो वर्ल्ड कप जीतता है 2020 what 2021 Lewandowski. नहीं हाँ लेवेंडोस्की, बट 2018 इट वाज लूका मॉड्रिच हु वन द क्या कहते हैं बैलन डोर एंड नॉट किलियन एम्बापे और एंटोनियो ग्रिजमान क्या कहते हैं वन द बेस्ट प्लेयर ऑफ यूरोपा. दे वन एटलेटिको मैड्रिड वन द यूरोपा ट्रॉफी एज वेल एंड ही वन द क्या कहते हैं वर्ल्ड कप विद गुड स्टैट. ऐसा नहीं था ही डिडंट डू एनीथिंग और वो वाली बातचीत. ठीक है हाँ आई डोंट हैव एंड और भाई अग्रीड देयर हैज बीन, मतलब वही कह रहा हूँ लास्ट बारी जब ऐसा हुआ था कि जिसकी टीम बैलन डोर जीती थी, जिसकी टीम वर्ल्ड कप जीती थी उससे वो जीता था, पता नहीं कब वो था. टीसीएस भी एंटी मैसी. आई एम गिविंग एग्जांपल्स भाई. मैं तो रोनाल्डो को भी बताया और उसका भी बताया. इट्स नॉट वो है, इट्स द रियलिटी. बट प्रणय भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि टॉप 10 में कितने मैन सिटी प्लेयर्स आप देख रहे हो? टॉप 10 में मैं कितने प्लेयर्स देख रहा हूँ फ्रॉम मैन सिटी? if I have to name, like, I think Haaland, KDB there is already there. Definitely I think Rodri should be there. मतलब 100% I think Rodri should be there. And मतलब बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ पे डिबेट करें, बट आई थिंक हुलियन अल्वारेज शुड गो. अगर आप वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ही उसकी देखोगे, ठीक है, मैन सिटी में शायद उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था फर्स्ट सीजन के हिसाब से, बट जो उन फिक्चर्स में था पोस्ट लाउतारो मार्टिनेज की खराब फॉर्म के बाद जिस तरह से स्टेप अप करा हुलियन अल्वारेज ने, आई थिंक हुलियन अल्वारेज वाज द मिसिंग पीस फॉर दिस अर्जेंटीना टीम. उसके आने के बाद जो शार्पनेस आई थी इसके अंदर अर्जेंटीना के अंदर, इट वाज प्रिटी वो. मैन सिटी में उतना इन्फ्लुएंस नहीं बोलूंगा, बट अगेन द बॉय हैज़ वन एवरीथिंग, सो जस्ट वही है कि सारी ट्रॉफीज कंप्लीटेड फुटबॉल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो उस वजह से यू हैव टू पुट हुलियन अल्वारेज. बाकी आई थिंक उसके अलावा अगर मैं और प्लेयर्स के नाम लूँ तो दैट वुड बी ग्रीडीनेस. सो आई थिंक फेयरली आई वुड से कि ये 4 प्लेयर तो डिजर्व करते ही करते हैं. और मतलब अगर 5वां प्लेयर इफ आई हैव टू पुट इवन अबव और इवन लाइक आई थिंक तो फिर मैं गुंडोगन डालूंगा, मतलब 5th प्लेयर, लाइक, बट आई वुड रेट हिम फेयरली समवेयर अराउंड हुलियन अल्वारेज के बराबर में. आप गुंडोगन को अल्वारेज से ऊपर नहीं रख रहे हो? यू आर पुटिंग क्या कहते हैं अल्वारेज अबव गुंडोगन जस्ट बिकॉज़ ही हैज वॉन ऑल द ट्रॉफीज. अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे, बट वही तो क्लच तो देख उसी ने करा ना, क्लच तो देख गुंडोगन ने नहीं करा हर जगह. हाँ वही तो कह रहा हूँ. तो आई थिंक क्लच की वजह से, तो आई थिंक इफ यू आर जस्ट टेकिंग क्लच के हिसाब से तो फिर यार तब तो फिर गुंडोगन को ही डालना चाहिए. बट आई थिंक यार अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, तो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मैं शुड आई कीप रॉड्री एंड गुंडोगन एट द सेम लेवल, बिकॉज दोनों का इन्फ्लुएंस उतना सेम था. बस गुंडोगन के पास बस यूसीएल फाइनल गोल नहीं है. Apart from that, he has done all this, very similar stuff for what Rodri has done for City. What Rodri has done, it is more, I would say, defensive plus thoda attack, and Gundogan has like a mixed balance of things. कि यार उसने goals भी मारे हैं,
everywhere he is, and he's a clutch player, वो हम सबको पता ही है. But I think just on basis of that, I think ये 5 प्लेयर्स का तो अब होना चाहिए. इसके अलावा तो आई थिंक वही है. आई थिंक लेने को फिर मैं और भी 3-4 सिटी के प्लेयर्स का नाम ले लूंगा, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी समथिंग Top वेरी 10 Man City lineup. नितिन भाई any player that you want to omit, जो भैया ने प्रणय भाई ने कहा अभी 5 players. I wouldn't take Alvarez because I think overall, I think for me I would have 3 players in Man City's 10 at least. In the top 10 will be Haaland, De Bruyne. Sorry, 4, Rodri and Gundogan. I thought Gundogan was super clutch last season. Like probably the most clutch player in the league last season. मेरे को I agree कि भाई रॉड्री तो होना ही चाहिए. हालैंड इज देयर, केविन डी ब्रुयने इज देयर, गुंडोगन इज देयर. डेफिनेटली गुंडोगन इज देयर. चाहे वो बार्सिलोना का प्लेयर बन गया और लोग बोलेंगे जैन भाई वो बार्सिलोना का प्लेयर है, बट ही डिजर्व्स जितना क्लच वो बंदा है. It'll come under Man City and Barcelona. He's played 4 games for Barcelona. But It'll come like that. he surely 100% deserves it. Alvarez के बारे में भाई, अगर if it's about trophies then मतलब he has completed football in a single season, तो फिर तो वो आएगा. अगर परफॉर्मेंसेस के बेस पे अगर जाएंगे तो फिर मैं शायद से बिकॉज लेस क्या कहते हैं नंबर ऑफ मिनट्स अगर आप करो कि बाकी जो भी हैं, मतलब ओसीमैन इज आल्सो देयर जो शायद आप नंबर 10 में देखोगे बिकॉज ही हैज अ फिनोमिनल सीजन नापोली के साथ. एंड देन क्या कहते हैं फिनिश सेमीफाइनल. विनीशियस जूनियर इज आल्सो गोइंग टू बी देयर अगेन, अ फिनोमिनल सीजन. किलियन एम्बापे इज गोइंग टू बी देयर. और कौन से बंदे जो टॉप 10 में होंगे? 5 तो भैया ने अपने 4 ये हो गए, 3 ये 7 हुए. 3 और बंदे कौन से थे? Which should be there, no? For historic Napoli season. Kvaratskhelia. Probably. Don't think so. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ उससे बेटर कौन है. रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ओनली पिचिची एंड क्या कहते हैं वो ला लीग तो है, ठीक है. टॉप 10 में कौन हो सकता है भाई? एनीबॉडी? निकोला ब्रेला, चैंपियंस लीग फाइनल, थर्ड इन द इंटर मिलान. No. You'd have to give the Napoli boys it, no? Oh, Bernardo Silva, we are not saying Bernardo Silva, bhai. He's so definitely there, bhai. क्या लगता है compared to the others? In comparison to the other Man City players we name? मतलब क्यों Bernardo Silva? मैं भाई मैं तो जब भी वो 4-0 वाला देख लेता हूँ गलती से, और ये सोनी वाले दिखाते ही वही है सिर्फ. They don't have any other thing to do. दिखाते वही है. सुबह 7 बजे उठ के मैं देख रहा हूँ रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड या जो भी मैच चल रहा है, प्रैक्टिस मैच जो भी चल रहा है, ट्रेनिंग उससे पहले, उसके बीच में, उसके बाद दे आर शोइंग वन मैच और वो भी रिपीट पे. उसमें तो भाई फिर बर्नार्डो सिल्वा सर बर्नार्डो सिल्वा वाज एक्सेप्शनल. क्या कहते हो प्रणय भाई? यू मिस्ड आउट ऑन बर्नार्डो सिल्वा. यार वही बात है कि अब मैं वही बोलूंगा कि मैं सारे वही है कि यार अब मैं फिर बर्नार्डो सिल्वा ऊपर बोलूंगा और किसी के तो फिर वापस लोग बोलेंगे यार इसके ऊपर क्यों है, इसके ऊपर क्यों है. तो आई थिंक मैं देखो 3 प्लेयर्स जो मेरे को लगते हैं वो फिक्स हैं. अब उसके ऊपर बाकी 6, 7, 8 वॉकर भी अब मैं बोल दूं, बहुत सारे लोग वॉकर को भी बोल देंगे यार उस हिसाब से जो सिटी में उसका इन्फ्लुएंस था. बट वही है ना यार कि सबको आप नहीं डाल सकते एक बार में. डियास को बहुत सारे लोग बोल देंगे कि यार जिस तरह से उसने डिफेंस होल्ड करा पिछले सीजन, तो मैं पूरी मैन सिटी की लाइनअप ही गिना दूंगा ऐसे तो. बट आई लाइक जस्ट बी प्रैक्टिकल. ऑन प्रैक्टिकलिटी इट्स नॉट पॉसिबल. तो टॉप 3 के अलावा आई थिंक मैन सिटी के अलावा अगर आप कोई भी प्लेयर ले रहे हो तो वो फिर यू आर नॉट देन कंसीडरिंग देन अदर कि आप सिर्फ एक ट्रेबल, या तो आप उन प्लेयर्स को ये बोलो कि यार मेरे लिए सिर्फ ट्रेबल ही मेरे लिए एक वो है कि भाई जिस टीम ने क्लब को पूरा कंप्लीट करा है उन्हीं प्लेयर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा. तो आप उस वे में फिर आप बोलो तो फिर उसमें बहुत सारे बड़े ओमिशंस हो जाएंगे जो कि शायद आपको अच्छे ना लगें. बट अगर आप ओवरऑल अगर आप उससे बोल रहे हो कि यार किसका कितना इन्फ्लुएंस था, किसने कौन सी बड़ी ट्रॉफीज जीती, या लाइक व्हाट डू यू पर्सनली थिंक और किसको आप ज़्यादा रेट करते हो, तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक ये 5 प्लेयर सिटी के मेरे हिसाब से तो होने चाहिए. बट आई थिंक 5 तो यार मेरे को लगता नहीं होंगे. आई थिंक मेजरली जो मेरे को 3 जो मेरे को लगते हैं वो यही है मेरे हिसाब से. तो आई थिंक इट शुड बी ऑफ कोर्स हालैंड, केडीबी तो यार देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. एंड देयर हैज टू बी एटलीस्ट ईदर रॉड्री और इट हैज टू बी आई थिंक गुंडोगन. मेरे को अल्वारेस भी शायद, वही बात है कि अब अल्वारेस भी शायद मेरे को टॉप 10 पे मिस आउट करता हुआ दिख रहा है. लाइक
बट वही है कि अगर आप ट्रॉफी देखोगे तो यार वो थर्ड, फिर तो उसे थर्ड नंबर पे होना चाहिए उस हिसाब से। True तो that, वही बात है true कि आप क्या चीज जज करके आप किसी प्लेयर को बोल रहे हो। ट्रू दैट मतलब, लेकिन भैया लेकिन बात अच्छी ना कि आप सही कह रहे हो कि भाई कितने आ सकते हैं टॉप 10 में, चाहे तो सबका नाम ही डाल सकते हैं लोग, बट द थिंग इज कि क्या मैन सिटी के प्लेयर्स से ज्यादा कोई डिजर्व करता है? डू यू थिंक सला डिजर्व्स मोर देन बर्नार्डो सिल्वा इन द टॉप 10? डू यू थिंक सो? मतलब दे हैव, मतलब यस सला डबल डिजिट गोल स्कोरर एंड वो, बट एट द एंड the team landed in Europa League, Liverpool, unfortunately, भाई that is sad, but do you think he deserves more? मेरे ख्याल से तो नहीं। पता नहीं, मतलब लाटूरो इज अ गुड शॉट, लाटूरो डेफिनेटली इज अ गुड शॉट, लाटूरो चैंपियंस लीग अरे फाइनल नहीं भाई, देन वन लाउटारो तो नहीं यार। क्यों भैया, मतलब जस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर आई और थिंक, हाँ, फिर अगर वर्ल्ड तुम कप भी जीता। सीरिया को अगर तुम करो, हाँ, वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उसने करा क्या यार वर्ल्ड कप में, ये भी तो तुम देखो ना यार। हाँ वो बात सही है, बट अगर आप उसकी बात, मार्टिनेज तो भाई मतलब ही वाज, आई थिंक मार्टिनेज वाज कंप्लीट फेलियर भाई फॉर वर्ल्ड कप पे। ही वाज नॉट द सेम लाउटारो मार्टिनेज जिसको हम रेट कर रहे थे, सीरिया में देखा, जिसको हमने चैंपियंस लीग के मैचेस में हमने देखा। ही वाज नॉट द सेम प्लेयर। ठीक है, वो जीता वर्ल्ड कप, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसका इन्फ्लुएंस क्या था उसमें, वो भी एक मैटर करना चाहिए ना वो चीज। स्टैगरिंग 21 गोल्स लास्ट सीजन, 21 गोल्स, 7 असिस्ट, दैट इज सम, मतलब गुड, और फिर वर्ल्ड कप उसके साथ है ही है। स्टीयर ऑल ओके, ऑल कॉम्पिटिशंस, अभी ये सिर्फ सीरिया ए में 21 गोल्स हैं, 28 गोल्स 11 असिस्ट लाटूरो मार्टिनेज। देन तो भाई यू हैव वही टू, है कि मतलब क्लब के हिसाब से डालना है तो आप डाल सकते हो। ट्रू। फिर लाटूरो नो वे ही गोइंग टू, भाई इतना भी नहीं है भाई कि आप सीधे वही बोल दो भाई। हाँ भाई अमन भाई, हमने जो रैशफोर्ड की लोगों की बात कर रहे हैं, हमने रैशफोर्ड वाली बातचीत पूरी कर ली है, सब कुछ कर लिया, और हमने अब पूरी बातचीत कर दी। देखो विनीशियस जूनियर टॉप 10 में होगा, ठीक है, लेकिन जहां होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल उसने 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 पिछले साल चैंपियंस लीग जीता था, सब चीज परफॉर्म करी थी, चैंपियंस लीग फाइनल में गोल था, तो वो 8th फिनिश और 7th या 8th फिनिश करा था उसने। तो मैं इस साल तो फिर भाई मैं चाहता हूँ वो 5th फिनिश करे, बट भाई लेकिन नहीं, नोबडी का जीतने की कमेंट बात सबसे नहीं कर, बेस्ट है भाई। नोबडी के क्या कमेंट बोले? सबसे बेस्ट है भाई। अनपॉपुलर ओपिनियन, लाउटारो शुड गेट नेगेटिव पॉइंट्स फॉर हिज नेगेटिव वर्ल्ड पॉइंट। कप परफॉर्मेंस rather than counting as an achievement। ओए यार। सच बात है वैसे तो, मतलब एग्जैक्टली यार, मतलब उसकी that- उसकी मेमोरीज मेरे साथ तो अच्छी नहीं है वर्ल्ड कप में, जब भी मैंने उसको देखा है। तो भाई अब कोई ये बोल दे भाई मैंने सीरिया के सारे मैचेस देखे हैं और लाउटारो बहुत उस चीज में है, तो भाई वो एक अलग बात है। भाई मैं तो उतना सीरिया नहीं देखता ऑनेस्टली, इस सीजन से शायद स्टार्ट करूं, बट ट्राई वही कर है लो। कि भाई मैंने उसे वर्ल्ड कप में देखा है, तो वर्ल्ड कप में तो हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, सो ही इज नॉट इन माय टॉप 10। बट इसका आंसर बता दो, मतलब डेथ स्लेयर भाई तो इसी क्वेश्चन पे जानना ही चाहते हैं यार, ये रिलीज क्लॉज का क्या चक्कर है? कैन बारसा फैंस ड्रीम अगेन प्रणय भाई बर्नार्डो सिल्वा के लिए, या फिर द ड्रीम्स नहीं ओवर? भाई, ही इज नॉट फॉर सेल। पिछली बार भी आई थिंक बारसा आई तो थी 80 मिलियन या 90 मिलियन, जब पिछले से पिछले ट्रांसफर विंडो में भी, वो क्या नाम है उनका, कि सरप्राइज साइनिंग जेरार्ड होने रोमेरो, वाली थी जेरार्ड रोमेरो की। आई डोंट लव थिंक यू सो ही इज जेरार्ड। गोना लीव, आई थिंक, हाँ, लेट्स सी। बट यार इन फुटबॉल यू नेवर नो यार, मतलब बारसा है तो यार मैं बारसा से ही डरता हूँ सिर्फ। सिटी के प्लेयर्स हैं तो भाई मैं बारसा से ही डरता हूँ, बिकॉज सिटी के प्लेयर्स सिर्फ बारसा ही पुल कर सकती है, और मेरे को लगता नहीं कोई ऐसे पुल कर पा रही है। चाहे टॉरेस ले लो, गार्सिया ले लो, गुंडोवान ले लो, तो मतलब वही बात है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, When it's लास्ट क्वेश्चन Barca, है I'm scared. दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हालैंड वर्सेस मेसी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज गोइंग टू फिनिश एंड इन द क्या कहते हैं फर्स्ट प्लेस कौन करेगा, उससे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नीतीश भाई तब से पूछ रहे हैं। भैया क्या लग रहा है आपको, लड़का टॉटनहैम को कुछ करवाएगा इस बारी? टीम खराब कर दी, ऐसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत ही तगड़ी कर दी। भाई का नाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या नाम है भाई का? पोस्टेकोग्लू, यस पोस्टेकोग्लू, कुकिंग दिस Postecoglou. सीजन। Ange. नितिन भाई, पोस्टेकोग्लू, लव हिम। Good manager. Yeah, I think he's a good manager. I think he's got them playing really fluid at the moment. He's giving youngsters a chance like Destiny Udogi.
And he seems to also be playing really well. Of course, the goalkeeper also has had a really good. He had a shaky first game, and then the other 3 games have been pretty good. I think so. When I did Premier League predictions on my channel, I gave Spurs an outside chance to qualify for Champions League, fifth place. So I think he's playing a more attractive of kind of football. It's not revolving around Harry Kane. Everyone is contributing. I think so far so good. But some things are to be questioned. The League Cup where he played his second team and got knocked out. Like I didn't quite understand that because they don't have tournaments to play midweek. So I was very confused with that tactic. But well, Tottenham can only win the FA Cup now. They're going to not have a very unlikely they're going to win anything. So I think top 5 outside chance is very very strong because they're going to play 1 game a week for a long lot of the season. प्रणय भाई फाइनल क्वेश्चन है आपकी जान से पहले, whom are you supporting and why do you think that guy will win it? मतलब देखो obviously मेसी की तरफ ये बातचीत तो है कि he has completed his story, जो मतलब 2014 में अधूरी रह गई थी वो स्टोरी पूरी, तो ये तो पोएम है पूरी पूरी और पिक्चर भी बन सकती है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि he won it, the way he won it, what he did in the World Cup, मतलब जितनी आप बात करो उतनी कम है. He showed everybody. and Gvardiol का सबसे बड़ा हाईलाइट और लास्ट सीजन है जब मेसी ने इधर उधर करके भाई असिस्ट दिया था एल्वारेस को. दैट इज द भाई हाईलाइट ऑफ गॉर्डियोल की एक और हाईलाइट है, उसने 7 गोल खाए थे भाई सिटी के अगेंस्ट, तो वो भी सिटी एक गेम. हाईलाइट है उसकी, ठीक है. गॉर्डियोल को मतलब बीच में उस हाईलाइट में वो छुपा है, लेकिन बट वही है मेसी कमेंडेबल एक्ट. ठीक है, वही इफ यू टॉक अबाउट हालैंड, देयर इज नो रिकॉर्ड दैट वाज नॉट ब्रोकन लास्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग. फर्स्ट गाय टू डू दिस. फर्स्ट उसमें इतने हैट्रिक मार देना जितने बाकी लोग सोचते नहीं है. ठीक है, एंड व्हाट नॉट विनिंग द ट्रेबल इन द फर्स्ट सीजन. ठीक है, एंड डूइंग एवरीथिंग. अभी एक और ट्रॉफी भी जीतनी भाई ने, बेस्ट प्लेयर in the Champions League top scorer, this, that, everywhere. That was Haaland in the club section. It was Messi in the World Cup. And Haaland did not play the World Cup. तो आपको क्या लगता है? Your views and फिर Nathan भाई, and then we can go home. यार अगेन आई विल से कि यार दो चीज़ें हैं. लाइक someone who loves Messi, I think वर्ल्ड कप बायस तो यार देखो होगा ही होगा फिर आपका. और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल भी है कि यार somehow I want like मेरा ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है, बट आई थिंक मेरा एज थोड़ा सा आई थिंक हालैंड की तरफ ज़्यादा इसलिए भी है बिकॉज I think Messi has won it already a lot of times here. So I don't know कि even if Messi cares about Ballon d'Or, he's already have so many Ballon d'Ors. I think the only people who are saying कि यार ठीक है मतलब हाँ for the World Cup stint और जो एक स्टोरी होती है यार फुटबॉल कंप्लीट करने वाली और वो सारी चीज़ें, for that of course Messi is there and he's there to win it. But I think equally it is no lesser than like जो हालैंड ने करा अपने फर्स्ट सीजन में. I don't think so कि यार और कोई भी प्लेयर ऐसा अभी नियर टाइम में, या तो अगर एम्बापे आता है, एम्बापे ऐसा कुछ करता है तब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. बट जस्ट सोली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आई थिंक फॉर बोथ मेसी एंड हालैंड कि मेसी के वर्ल्ड कप ईयर में ही इज हैविंग अ प्लेयर लाइक हालैंड. It will be very unfair for Haaland to if he doesn't win it, and for Messi I think it will be unfair कि यार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही didn't win Ballon d'Or. So I think दोनों की बस टाइमिंग गलत हो गई, दोनों ने एक साथ ही जीत लिया, तो उसमें से हमें we have to pick out. Again it goes out to individual performances. मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप पिक कर रहे हो तो यू हैव टू, अब आप क्या पिक कर रहे हो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और आप क्या, जैसे कि मैंने स्ट्रीम के स्टार्टिंग बोला कि आप क्या देख के किसी को आप दे रहे हो बैलन डोर. मेरे हिसाब से आई थिंक यार फॉर मी आई थिंक देयर इज एन एज टुवर्ड्स हालैंड, but I somehow think that Messi is gonna win it. Not that I think Messi cares about Ballon d'Ors, he's already won a lot of them, but regardless I think probably the last time we are seeing Messi in Messi मतलब रोनाल्डो का तो इस साल नॉमिनेशन नहीं हुआ. आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई डोंट थिंक शायद मेसी नॉमिनेट होगा बिकॉज इट्स मेजरली बायस, अगर आप देखें तो यूरोप से ज़्यादा होगा. सो आई थिंक फॉर द लास्ट टाइम इफ ही इज नॉमिनेटेड एंड इफ ही इज विनिंग इट, आई थिंक ये भी एक अच्छी एक क्लोजर मिलता है स्टोरी को, जैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक क्लोजर मिला मेसी को कि भाई फुटबॉल कंप्लीट कर लिया. उसके बाद जो स्टेटमेंट है ही वाज केयर फ्री अबाउट इट.
थिंक बैलन डोर मिलने के बाद भी शायद सेम हो, बट हाँ आई थिंक whoever win it, आई थिंक मेरे हिसाब Totally से deserves it. मेसी को तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ दोनों ही डिजर्व करते हैं यार मेरे हिसाब से तो। और आपका इस चीज पे क्या कहना है, जो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हालैंड वाज नॉट दैट मच ऑफ अ गाय, मतलब कंट्रीब्यूटर इन द बिग गेम्स, टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग फाइनल, मतलब मैं तो इस पे ये कहता हूँ कि सेमीफाइनल में इफ इट नहीं भाई, वाज नॉट किसने कोर्टुआ, किसने बोला ये कि हालैंड डिडंट कंट्रीब्यूट इन द फाइनल, या अब फाइनल, अब यार देखो, अब अगर आपका एक तरफ यार, ये वही लोग बोल सकते हैं जिनका बायस है एक साइड पे। आई थिंक नन ऑफ द, इफ यू आर अ न्यूट्रल, और इफ यू क्लेम टू बी न्यूट्रल, और इफ you're जस्ट समवन who's trying to say facts, तो आप ये मतलब अगर आपका बायस, अगर आपका सेट है कि यार मैंने अपने मन में एक विनर बना लिया है, तो अब आपके पास कोई भी अगर आपको पॉइंट देगा ना कि अरे ये चीज तो ऐसे नहीं थी, तो आप बस उसको उसी एंगल से ही देखोगे। लाइक जैसे कि अभी जब हम गोल्डन ग्लव की बात कर रहे थे कि अगर आपने अपने मन में ऑलरेडी विनर बना लिया है, तो दूसरे के जो भी, चाहे दूसरे के कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हो, आप उस चीज़ को शायद ना कंसीडर करो, क्योंकि आपके लिए एक्स पर्सन इज अ विनर। बट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल उसमें बोलूँ कि यार जो लोग बोल रहे हैं कि हालैंड डिडंट टर्न अप फॉर द फाइनल और बिग गेम, वी वर प्लेइंग फाइनल बिकॉज ऑफ हिम, we won the Premier League because of his goals. तो it doesn't really matter कि बिग गेम में कौन टर्न अप हो रहा है, कौन नहीं टर्न अप कर रहा है। हिज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। ही मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी उसको अपने आप को क्लैरिफाई करने की जरूरत है, किसी भी चीज़ के लिए उस करने की जरूरत है। ही हैज डन एनफ फॉर इट, एंड इफ यू कांट सी दैट, और आपको जस्ट अपना एक पॉइंट प्रूव करना है कि यार हाँ, जस्ट बिकॉज उसने फाइनल में कुछ नहीं करा, चाहे एफए कप फाइनल हो, कोई भी गेम का फाइनल हो, और उस वजह से उसको नहीं मिलना चाहिए, देन आई थिंक दैट इज योर इंडिविजुअल बायस। वो उस चीज पे फिर मैं डिबेट, उस चीज पे मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो आप उसको उल्टा ही लोगे, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट डिस्कसिंग इट। हाँ टोटली तो योर कॉल इज, मतलब ऑब्वियसली हालैंड एट द एंड शुड, मतलब जो भी आई एम विन एजिंग करे टुवर्ड्स डिजर्व। आई एम एजिंग टुवर्ड्स हालैंड, नॉट सेइंग कि यार मेसी को नहीं जीतना चाहिए। माय एज इज टुवर्ड्स हालैंड। आप उसको थोड़ा सा शायद इस चीज में बोल दो कि यार सिटी के वाइस में आप उसको बोल दो, थोड़ा सा बाइस इस चीज में होगा, क्योंकि मैंने देखा है यार, तो मेरे लिए तो यार वो एक अलग चीज थी, तो मेरा तो बहुत ही अलग सीन है उस चीज में। बट योर ओपिनियन, मतलब मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता कि आपका क्या, आप क्या सोचते हो। आपको जो सोचना है वो आप, यू आर फ्री टू थिंक, वी आर ऑल फ्री थिंकर्स, सो वो चीज है। नितिन भाई, योर व्यूज ऑन द वो मेसी और हालैंड, who's going to win it? I give the edge to Haaland, and quite honestly, if you think about it, a young kid, first season in the Premier League, just a blistering start. Uh, I don't think anyone expected it. Well, let's be honest. I don't think anyone expected the output in the first season. Goes on to win a historic treble, only done once before in the country's history of football. करेक्ट। Um, Apparently, trebles and Manchester go hand in hand. Anyway, never mind. Another thing altogether. But um, and I'm going to see. Listen, I'm going to just, because everyone is just abusing me in the chat, so I'll just address it very simply. I told Jayant a couple of months back, enjoy Messi and Ronaldo while they're here. Instead of fighting with each other, watch it. Because I've had the privilege of watching Federer and Nadal play prime tennis my whole adult life, and I've enjoyed it. And when Federer retired, I was in tears, even though I'm a Nadal guy. Just enjoy it. I have a very controversial take, and we actually discussed this in depth. For me, I think Emi Martinez was the player of the final. So, and I think Emi Martinez is the reason Argentina won the World Cup. करेक्ट। I believe he had 2 penalty shootouts, if I'm not mistaken. So based on that, I would edge it to Haaland. But quite honestly, like Pranay said, I wouldn't be surprised if Messi got it. So मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि भाई, जो प्रणय भाई ने वो बात की थी स्टार्टिंग में कि ये दोनों चीजें एक साथ होगी, तो दोनों आर वेरी अनलकी, मतलब दैट सम्स अप द होल बैलन डोर की सेरेमनी जो होने वाली है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड कप एक कुछ अलग सीजन होता, तो डेफिनेटली इट वाज क्लियर, जिस दिन 30 की नॉमिनी आती, दैट ऑन दैट डे इट वाज साइंड, और उसी दिन दे देना चाहिए था कि ले भाई, इट्स योर 30 की नॉमिनी की जरूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से, पहले नंबर को दे देते कि भाई देखो ये जीतने वाला, और वही हालैंड के साथ भी होता, क्योंकि भाई
कोई नहीं कर पाएगा, मतलब मेरे को नहीं लगता एम्बापे भी आएगा, तो फर्स्ट सीजन ऐसा होगा, मतलब फर्स्ट सीजन ऐसा करने के लिए यू जस्ट नीड टू बी हालैंड, You don't दैट इज know इट। until it's done ना, that is हाँ, वो वो वाली मतलब you don't बातचीत know। मतलब पहला मैच मेरे को याद है जब पहला मैच हालैंड का हुआ था, उससे पहले हाइप थी। पहला मैच था जब हमने कम्युनिटी शील्ड खेला था लिवरपूल के अगेंस्ट, तब जाके लोगों ने बोला यार हाँ इट वाज ऑल डार्विन नूनेज शो, और उस टाइम पे लोगों ने बोला यार हालैंड कुछ नहीं है, यू नो लाइक वेलकम टू रियल प्रेम, यू नो वेलकम टू द रियल लीग एंड ऑल ऑफ दैट। बट फ्रॉम दैट टू winning the treble, I think that has been like the whole journey. And honestly like वही है कि यार I had the privilege to enjoy the final, तो मेरा bias तो उस चीज पे थोड़ा सा होगा ही होगा यार, it's human nature। but वही है यार, किसी ने कमेंट ने सही लिखा यार, बैलन डोर वालों को एल फर्क नहीं पड़ता कि यार हमारे क्या ओपिनियन है। इट वी हाँ देयर कुड बी 3 people जिनके 3 अलग अलग ओपिनियन होते हैं, वी आर ऑल जस्ट सेइंग आवर माइंड आउट कि किस तरह से हम किसी चीज को क्राइटेरिया करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके वोट करने वाला हूँ या नितिन भाई जाके वोट करने वाले हैं या No, जयंत वोट करेगा। it's so funny you say that, Pranay. I actually, Jayant can quote me on this because I told him, I like Michael's answer because honestly, I was wondering about that. Michael's answer makes a lot of sense to me because he's actually won it all. Julian Alvarez. So I believe it was either Suraj or Jayant I was talking to. I was like, why not Julian Alvarez? Like he won everything, right? If everyone's going to go, he won in 36 years. Then Julian Alvarez won something that's not won in 36 years and something that's not been done apart from one time in football history in England. So shouldn't he win it then if you're going to do that? Like, so that's what I'm saying. It's like you said, whatever you say, no one's going to be happy. So best thing is to just vote and whoever wins wins. But if you're going to ask people's opinion, you shouldn't get upset about it because well, it's their opinion and your opinion is also valid. And I'm reading it here, and there are a lot of people who are fighting for Messi, and I respect that because it's a player they clearly love, and fair enough, fair dues. This is what football is about, passion. But you don't need to like abuse, because at the end of the day, we'll read your chat and we'll take your opinion into consideration and we'll note what you said. And when Messi or Haaland win, you can come back and go, I told you, and we'll be like, yeah, you did tell us, dude. Fair enough. एंड एग्जैक्टली भाई, मतलब मैं एफपी गेमिंग भाई, तू ये कह रहा है कि रोनाल्डो के सेम वो होते, तू ये कहता कि वर्ल्ड कप जीता। एग्जैक्टली भाई, कुडंट अग्री लेस भाई। ऑब्वियसली भाई देख, मैं एक रोनाल्डो का फैन हूँ, मेरा उस पर बायस होगा। आप मेसी के फैन हो, आपको मेसी बायस होगा ही। एंड सेम गोज फॉर, मतलब फेवरेट प्लेयर होता ही वो है ना जिसके पास, जिसके लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट चीज है, तो दैट इज फॉर श्योर भाई। एंड भाई क्या कहते हैं, बेंड ओवर भाई, इट्स वो ये बात नहीं कह रहे कि सो मेसीज गोल एंड असिस्ट आर यूजलेस एंड ओनली एमी वॉन देम, नहीं भाई। इट्स अबाउट कि जिन लोगों ने कहा कि भाई उसने क्या किया वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब चैंपियंस लीग फाइनल और सेमीफाइनल में हालैंड ने, तो वही वाली बात थी कि केडी भी कंट्रीब्यूटेड मोर, लोग ये कह रहे हैं। बट उसी चीज पे भाई ने आंसर करा, नितिन भाई ने, कि भाई ऐसे तो एमी मार्टिनेज ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया सेमीफाइनल में, बिगर देन एनी अदर गाय इन हिज टीम। भाई जब पेनल्टी शूटआउट में गया है तो इट्स ऑल अबाउट एमी मार्टिनेज भाई, द वे ही हैज डन थिंग। तो मतलब वही है, मैं तो ये कहूंगा कि whoever wins it deserves it, whoever loses it should be, मतलब लाइक कि भाई अगर कोई और साल होता तो मैं, मतलब डिफरेंट ईयर्स होते तो होता, अगर 2 बैलन डोर दे सकते तो दे दो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी जीते जीते, आपको पता है मेरा आंसर क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, मेसी 7 जीत चुका है, एक लड़का 1 जीत जाएगा, तो एम्बापे के अंदर एक लंबी आग जलेगी जैसे वो रियल मैड्रिड आएगा। तो एट द एंड एवरी आंसर कनेक्टेड टू रियल मैड्रिड, एट द एंड every answer is connected to Real Madrid and it always will be। तो थैंक यू यार प्रणय भाई, थैंक यू। मैं बहुत अच्छी बातचीत, बहुत मजा आया। होप सो आपको भी बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर बिल्कुल, थैंक यू। चलो बाय बाय। दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टैकल फ्रॉम बिहाइंड और प्रणय टीएफबी दोनों को, प्लीज डू दैट भाई। चलो और भाई थैंक यू गाइस, एंजॉय, गुड नाइट। B9, it's not, dude, I didn't get offended. I read your thing, but I didn't get offended. I'm just, see, it's my point of view. Yeah, I am a United fan, and I just picked Haaland. Like, whatever you guys want to say about Giant, right? That is something I can't interfere in. But as a United fan, picking Haaland, listen, man. I'm just saying it's fair. I appreciate everyone's love. I appreciate Giants' love for Ronaldo. This Siu thing is getting a little old for me. I have to listen to it all the time. But I appreciate it because it comes out of love. And if you don't watch football and don't love players, then like, what are you watching it for? Watch table tennis or something, which is boring. So
So it's fair enough. Yeah, I'm not offended, Bina. I was just like answering the question because it's like people think we have a Ronaldo agenda, but the thing is, at the end of the day, dude, Ronaldo and Lionel Messi are the greatest football players ever, dude. It doesn't Uh, matter which one you think is better than the other because what I would call both of them are quite simply game changers. That's it. They have exactly, changed the bhai. game. Because believe me, when I tell you Haaland and Mbappe are not going to be this consistent. I've told Jayant this last year. He'll find out in time. But I've told him a year before that I don't think this is the next rivalry. So we'll see. So what we witnessed, Obviously, what all of us have witnessed, bhai. it does not get better than that. This is देखो the भाई, prime of prime football. सिंपल भाई, एज सिंपल एज दैट भाई। मतलब इट्स, मैं तो झूठ भी नहीं बोलूंगा, अगर रोनाल्डो यहाँ पर होता तो यू गाइस वी वर सपोर्टिंग हालैंड, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम लोग दूसरी तरफ होते हैं, और आज तुम उधर होते हो भाई। ऐसा जब जब मेसी वर्ल्ड कप जीता था तो आई वाज नॉट लाइक भाई सैड, और वो भाई लाइव स्ट्रीम पे थे, कॉन्ग्रेचुलेटेड, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल स्टोरीज जो भगवान ही लिखते हैं, डेफिनेटली भाई। इट वाज ऑल रिटन। 2014 में खत्म हो गया था वो सीन बंदे की, मतलब हिस्ट्री, मतलब उस पूरी स्टोरी में क्या नहीं है, ही हैज रिटायर्ड वंस, देन कम बैक, देन वर्ल्ड कप से इतने पास से रह गया, देन अगेन 2 वर्ल्ड कप्स, एंड at the end it was written for Lionel Messi to win it, bhai. But the thing is, bhai, you also have to agree कि भाई Haaland is edge to is, मतलब whoever wins it deserves it. It's not like कि Messi deserves more or Haaland deserves more. It's here, bhai. It's 50-50. Legends जो 50-50 होता है, anybody can win it, and let's see, bhai, who wins it, bhai. Your memes reveal your mindset. पता नहीं भाई, United fan picking Haaland over Messi, we can't understand. We can understand the pain, bhai. मतलब definitely, bhai, you can understand, bhai. But whatever what, whatever it is, what else to say? No, what else to say? That is the best way to put it. What else to say? but guys, whatever you guys say, it was a classic stream। मुझे तो बहुत मजा आया, आई होप नितिन भाई को भी मजा आया हो, एंड प्रणय I भाई को had भी fun. मजा आया। I always have fun. I always, you know why have fun? Because when the Messi supporters come in the chat, no, it becomes sorry, it becomes like an extended argument, you know, where we can bounce back ideas. So I actually enjoy it, and that's why even in my chat now I'm very lucky. I have like Liverpool fans, I have Spurs fans, I have City fans, and for me, I think it's honestly the best. And I think this is exactly what makes it fun. It's just that you don't need to abuse guys. It's like it's fair, man. If you're see, listen, honestly, I have no person in this race, so either way I'm not really going to personally get any joy out of it. So probably Giant will have to hear if Messi wins. I won't because for me भाई it देखो, makes no difference. But you know what I mean. मतलब You नहीं, know what I mean. I mean not like directly, but you'll get the memes. You'll get the the 8 times, 6 times, all that. For me, it's okay. Like I won doesn't my bother battle। me. I won my battle yesterday। B9 commented, जैसे स्ट्रीम खत्म हुई, B9 ने कल ये लिखा कि this channel will not grow in next 5 years, mark my word and whatever। Then after some time he changed his comment to Visca El Barca। That was my win, भाई। मतलब if your opinion and my opinion doesn't match, that doesn't mean कि भाई I hate you or you hate me। मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं वर्क करता। You want to write shit, you can write shit, भाई। I will not read that। Simple as that। It's in my hand। I respect Messi, ठीक है, but आपको नहीं लग रहा होगा तो फिर नहीं। मैं I तो said, भाई, I तो clearly said कि भाई मेसी और हालैंड, whoever wins it deserves it। It's not easy peasy कि भाई मेसी जीतेगा या हालैंड जीतेगा। You cannot just say, मतलब Yeah, clearly discredit what Haaland did। I don't think how everyone's making it sound like it's a given. I don't think that is fair. सिंचन मेहती That भाई, is नॉट गोइंग टू हैपन भाई। कोई और बैलेंडर जीत ही नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता भाई। dude. If it's the same thing, if Edison and Ter Stegen don't win it and Messi and Haaland don't win it, no, believe me when I tell you, I'll be the first person to come on anybody's live and tell you this award is rigged. Don't even count any of the awards given from in the future because none of them will go to deserving opponents because Messi or Haaland should win it. Ter Stegen or Ter Stegen or Edison should win it, and I will say the same thing. It's rigged if neither of them win it. I will say for both those things. एंड And बी I'm sure नाइन, Jayant will say if Jude doesn't win it, it's rigged. That's what I assume Jayant is going to say that if it happens. I don't. Maybe he नॉट गोइंग टू doesn't. I don't वॉच। know. भाई झूठ ही बनता है भाई। गाँव, यू ऑल आर माई पीआर मैनेजर भाई। B9, yesterday you proved that you don't think before you write, otherwise you are not going to edit, keep editing your comments। So
Well Don't said care. by Pratik. Players come and go. Real and Barca remain. Exactly. I agree, Pratik. I'm very Ter club Stegen should win it, oriented bhai. as I'm very club oriented as well. I completely agree. Bhai, Completely agree. Ter Stegen should win it 100%, 1000%. Ter Stegen should be there in the top 30 as well. मेरे हिसाब से तो definitely. Sure. For sure. Yes, Anthony needs to be discussed. Discuss Anthony. बच्चे बच्चे बताओ. I think it's a top Carlo Schmidt. I have not seen Schmidt play. Argentina manager. I don't think he'll do well in club football. Dude. France Deschamps has tried club football. It's not been successful. I think he's much more better uh, at भाई handling international. There are some coaches no that are really good at international coaches, dude. And when they come to the clubs, no, they get completely rinsed, completely. It's a very different ball game when you are on top of people, not for 1 month in the year, not for two weeks in the whole year. When you're next to them the whole time, no, it's a different ball game. They will be your best friend, no, because they know no you have nothing to lose. They have the entire country's talent at their hand. They don't care about you. But if you're a club manager and you don't show up no to work, or you say something about them, no, they can start creating toxicity in the dressing room. What's the nice thing about international football? In 1 week, no, in 1 week they have played 3 games, no, and they've gone. Whether they are good enough, not good enough, it doesn't make any difference. They're just gone. And that fellow sitting in the stands like that donkey Southgate, he's sitting in everyone's stands eating all the free food and watching football and picking the wrong players. It's like that. Some people are destined for international football because it suits their management style better. Nathan, discuss Anthony. Or are you ashamed? Bro, why will I be ashamed? I didn't do shit, dude. I have no control over these grown men. I have no control over these grown men. See, the reason I'm not commenting, I'll answer your question. Detsley and Arnab both asked me. I'll answer your question very simply. At the end of the day, no, I don't. Greenwood evidence was clear. And Anthony's evidence, though, we don't know if it is manufactured or not. But if you're asking me what I think about it, if it's true, he should be sacked instantly and he should go. Bro, my club over everything. These players have no value to me. These players have no value to me like that. My club is first and foremost Sir Alex Ferguson, and then whoever else has contributed in my lifetime of watching football. So if he has done it, if he's even touched a hair on a head, I'm telling you right now, you can clip it up, sack him, send him to wherever he needs to go, rehab, whatever, and get him out of the country. Because I don't require players this way, man. I've been telling Jayant for 1 year, forget Mbappe, move on, spend money elsewhere. Jayant, is this not true? Is this not true? For over a year, I've said it. But हम I've होंगे said I've कामयाब. said it. No. I'm just saying I've said it right to you. I am very consistent. Someone asked me, Nathan, will you take Mbappe to United? I'm like, fuck no, dude. Please. I have enough drama in my club. I don't need more. I don't need more, bro. I don't need more. So the answer to that question also is no. I'm good. भाई बस Sancho to Piers Morgan, love you भाई. But don't you think it's being repeated in case of Haaland, मतलब Ten Hag, that another guy is against him and talking मतलब out in the open that So I'll tell you what the difference between, in my opinion, what the difference between Ronaldo and Sancho is. In my difference between Ronaldo and Sancho is, Ronaldo basically broke the rules of his contract by going on Piers. It's the same rules that Sancho would have broken if he did the same thing. By the way, there is no bias here. I just want to make that one statement very clear. If Sancho does it unadvised by the Manchester United PR team or whatever, does the same thing, he also is in breach of his contract and liable for termination of contract. Now the difference is, Eric Ten Hag said, for this game, there are the other wingers that I've picked that have trained better than Sancho. नहीं, He but didn't he say also said he said Sancho was he's- not good enough because we have four wingers already. So but we have but picked but if four you wingers, two say playing, two starting. hmm, Two playing, two starting. We picked four wingers. So this is my opinion. My opinion is, first of all, you have to understand something. Sancho has had four coaches. All four coaches have complained about the same issue. Pep has complained about the same issue at City. Gareth Southgate complained about the same issue in England. The Dortmund coach has complained, or some coach in Dortmund has complained about the same thing. And now Eric Ten Hag. That's four coaches and four teams he's been coached by. The same issue has been brought up. Four different teams, three different countries. So
3 different places. Sorry. There has to be some. See, listen, I'm not saying Ten Hag should have handled it better. Sancho shouldn't have had a reply ready 20 minutes after the interview. So he has been sitting there waiting. Oh, what is he going to say Too about me? bold. Let's see. Too bold. 20 minutes, dude. 20 minutes later, he came out with a say. It looks so manufactured. No, you can't. I can't even explain it. But the thing is, it should have been handled better. But you cannot change the fact that Sancho has this history because 3 other coaches have given him the same warning. So you can believe Ten Hag, you cannot believe Ten Hag, but unfortunately, in the case of Sancho, there's actual evidence that proves Ten Hag's point. That is my opinion. I believe about till this? 2 o'clock our time, I believe the Saudi window's open. He might get a loan deal. Who knows if that happens? But that's my opinion on that. Excuse me. None of the Chelsea players made it to the Ballon d'Or list. Those rappers should wait for Grammys. Moving on. Moving on. भाई रुक जा यार, वो Sancho board to पे- claim that he अबे भाई- trained भाई- exactly, that's clear. Exactly my point. Who is he to claim he trained well? Also, we have 2 wingers starting and 2 wingers on the bench. From what I understand, is Ten Hag said that we have a better players to suit the system. See, listen, I'm going to only make up one thing. I don't know if you can believe this or not, but you all can watch the interviews and you can come to your own conclusion. Eric Ten Hag's English in conversing with people is not the best because he doesn't speak not broken English, but he doesn't speak fluid English. So you can misinterpret a lot of what he says as well. Eric Ten Hag. But yeah, he doesn't speak fluid English. So you can take that also into account if you'd like. But quite honestly, it's going back to too much drama at the club, and we have to get Don't you think this is a theme with Eric Ten Hag? Don't you? No, because if anything, it's a theme with Sancho because 4 coaches have complained about the same thing. And Manchester United still signed him, right? No, it doesn't. No. What like that, Baba? Like that, England picked him. Like But that, you just picked said him. na कि Eric Ten Hag What? didn't say that Sancho didn't train well. You just said that Eric Ten Hag never. So No. Eric Ten Hag never complained I about said his Eric Ten Hag said in the press conference that he has picked the best people to suit the team. We took 4 wingers. We played 2 and 2 on the bench. So basically you said, as per what you just said like 10 minutes ago, he didn't mention anything related to his training antics or anything, right? You had mentioned he chose the best wingers that were No, at he his said disposal. there were better players that trained in him for this in build up of this game, and that is why Jadon Sancho's the first sentence he said was, "I So believe I've trained basically, well." But what Jadon Sancho quoted was right? That no, it's Eric not Ten right Hag, because Eric Ten Hag said, "I have picked the best players in those positions to take with me to the squad." There so was a time. There was a time when Sir then Alex Ferguson had 4 strikers, and he would aren't take you being 2, and he debate wouldn't take about it? all. Sorry? Like when I ask you, did he say anything bad about him? As in, did he mention? I just think he said Jadon Sancho basically didn't train as well this week. That's what I got from it. And Eric Ten and Jadon Sancho complained about the very same thing, and it's a very good point also. Like every loss, everything that goes wrong with Manchester United under Eric Ten Hag, I am seeing certain players being targeted. Like first it was Cristiano Ronaldo, then it became the captain of the club, then it came down to Shom कौन था? There is Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, एक और कोई बीच में किसी को बीटी हुई थी. Yeah, this is No. Jadon Sancho. Jadon Sancho is the third player, right? Like in 1.5 साल, I think it has been like 1.5 year. He has Yeah, been but I mean, I can push back on that and say Ralph Ragnick said we should remove 10 players, and those 3 players played for Ralph Ragnick. No, for sure. He Ralph Ragnick said that they should remove 10 players, and he suggested 5. They got none. They So got if we are- none, but like Yeah. that, they didn't get Koulibaly when Mourinho picked.
They didn't get Moeller when Van Gaal was coming like that. They have been doing that for 10 years. नहीं, like see, if you are going by some ex manager जिसके साथ भी शायद एरिक टेन हाग के थोड़े सीन थे. Eric Ten Hag didn't wanted to work under him, and that is why the moment he got the opportunity from Austria, like I don't think I have heard good PR around Eric Ten Hag with nearly anybody. It's like that. ठीक है, किसी के साथ भी any player, the players that he has picked, I think they have been favored for sure. The players that he has picked, Lisandro Martinez, Anthony, nobody can explain me how Anthony starts in that team. ठीक है, No, if I he think puts in, I think the reason Anthony starts is actually I can explain it, but I don't think it's a good enough reason to start him. I think he plays Anthony because his defensive output is much better outlook is than great. any other winger we have, left or for right. for sure. So, And but you have a fullback at that position who is defensive, right? Who is very much a deputy, who's yeah. known for his defensive accolades, right? Aaron Van Bissaka is one player that you can rely on, at least on the defensive front of things. He might not be the best guy for the attacking part of it, so that's why I think you would rather have an attacking winger at that flank. For sure, you might want something else from the certain players. You might even want to play some other position players. जरूरी थोड़ी Jadon Sancho and क्या नाम है, your Anthony can only play there. There can be any other player, like Ilanga was earlier. You sold him. ठीक है, you can change Garnacho and play him there if he has a good outlet. ठीक है, you can play with Christian Eriksen there. Like Christian Eriksen has played in that position. If you think about work rate, and that's why you are playing somebody who isn't that effective in terms of goal contribution, then there are many players that can play in that role and might give you attacking contributions also. Eric Ten Hag, if I'm not wrong, Eriksen has more goals than Anthony this year. This year? Yeah. Uh-huh. So, matlab, I No, think see, there is. I just think that वैसे मेरी बात का आंसर मलासिया भी है. when it comes to Anthony, when it comes to Anthony in particular, and I've heard many people say this, and I agree with them. Anthony is Solskjaer's Maguire to Ten Hag. He's going to live and die on that sword until, yeah. No, De Gea was a free agent, dude. Like it was a matter of fact of just not. And like resigning. he wasn't suiting to the team for sure. Like Harry No, he Maguire is wasn't one suiting to player. the team, but strategically, I blame Ten Hag for that transfer window wise. But that is not related to what we are discussing. That is like a For theory sure. I have that's not relevant to this topic. I think Anthony is exactly what Maguire is to. Are you happy Solskjaer. with the way Manchester United is playing? I think so. I had a very controversial take. I watched all the preseason games, and I thought this is just my opinion, but um, I thought the kids played better than the starting 11. And my For sure. theory is very simple. The kids have played an entire season together with each other, majority of them. So there is inbuilt fluidity whether Ten Hag is the coach or the under 21s is the coach. Within themselves, they know what they're doing because they've done it the whole season. So I kind of just gave a pass to preseason because at the end of the day, I understand why the under 21 was playing better. It made sense on a very simple level without getting into Many great of your detail. players currently playing in your starting 11 are the players who were starting for you last year also. Like Yeah. who is new? Rasmus Holland. He just started. He just came off the bench. No. Mount got all the Mount starts and but he wasn't part of the last match. Like I'm talking about Arsenal no. game. Let's talk about Arsenal game. No, Like, Mount couldn't be part. He was injured, so he would have started. He would have started. I'm saying Yeah. Eriksen was your part of your last team, last year's team, right? Last year's Like team, if you're talking about team that are well gelled, they know how to play with each other. Your team that started, that was the very same team. Other than Onana, who as per many people is a better asset than David De Gea, it's an upgrade. So yeah, matlab, like they see the point. Bro, the point that it took him 28 years to be in prime. De Gea has been his entire 20s in his prime, dude. So Bhai, I am it is what it is. my point is how De Gea is clubless at this moment. I am clueless about it. Okay, what the F is Tottenham doing at this He's moment? done everything, dude. He's done everything he can. Like But honestly, but I think he'll go down what as a legend even if he retires tomorrow. So but I am shocked what is even Tottenham doing. Okay, like
David De Gea is a goalkeeper. Chelsea. I would take him in a blink of an eye for sure. Chelsea. Like Chelsea, you might say they have a manager who would want to Yeah. play from the back, right? Ange Yeah. Postecoglou uses Vicario most like Vicario. What does Vicario does? He can clear the ball. That's the best thing that he does. He's ठीक है? not very good with his hands. He reminds me of De Gea Hmm. actually. He does a lot of parrying. When De Gea was young, he used to do a lot of parrying. I've noticed. Many Spanish keeper do that. Kepa used to do that. Many, because it's all about confidence. When you're young, when you're new in a league, that's why They're I'm nervous saying, to right? catch it. Like you can have David De Gea in your team as your starting goalkeeper, and Vicario can be transitioned as your long term, because goalkeepers aren't just there for 1 or 2 years. You need goalkeeper for a very long time. So if Vicario takes a hit for 1 or 2 year, I don't think he would be that much bothered about it. And you can sit David, like today he is clubless. Okay, I think a team like Tottenham can benefit with him majorly. I think I have a feeling he won't play in England again. But like even if we don't know that offers are made for him, I have a feeling he won't play in England. So I just have that feeling. No, सेविया Yasi, शुड साइन listen. हिम. सेविया से बोनो चला गया ना, कीपर है क्या Yeah. उनके पास? they are aligning ऐसे reminiscence वाली 11 ना, Bro, nostalgic like 11. when I saw Ramos sign, I was like, fuck yeah, now I have to like Sevilla, dude. I was so और sad, dude. I was like Sevilla and Villarreal, I can't stand them, dude, with Atletico Madrid, and then Ramos signs for Sevilla, and I'm like, bruh. really? I'm like, why did Real Madrid go for them? Yeah, with the center back injury crisis, I was really surprised. Really surprised, yeah. Like, अरे okay. Real Madrid doesn't go for a certain age group players. That's their No, I mean, that's but their like when you don't मतलब have center backs, एम्बापे के you साथ know, सारी चीजें डाउन द ड्रेन जाती हैं. मतलब there are many principles that Real Madrid follows and all go down the drain when it comes to एम्बापे. ए बंद कर, ठीक है? that is क्या true. कहते, That is हाँ. true. And I don't other than that understand that. other than that they have strong क्या कहते हैं principles, and they follow the very same, like with like Cristiano Ronaldo was free. They could have signed him before he started a whole new league with himself. ठीक है? like the biggest, मतलब भाई मैंने पता है एक दो बारी देखने की भी कोशिश करी सऊदी का मैच. My goodness, it's for sure not a quality football. मतलब there are certain players that you know No, that are very good. people are saying like it's entertaining. I'm like, entertaining compared to what? But like, what are we Entertaining and comparing the entertainment अरे to? see Golf. entertaining. You see, Al Ali has a front line of Firmino, Saint Maximin, and Mahrez. They can do whatever they want to do, because every team is compiled of what, 3 to 4 good players, and then Yeah. all the remaining players, they are the local players, right? The The only Gulf the of, only player I think is genuinely legit Saudi player is Anderson Talisca. uh, Because I feel like even after all these players have come, Anderson Talisca is still playing. So you can clearly tell he should have gone somewhere else when he was younger because he's obviously of that quality. But no, he has. Talisca is also slowly getting out. Like Otavio will play in the position that no, he's no. But playing what I'm now. trying to say is he's been doing it for 3-4 years. He was in like the For Saudi sure. team of the year 3-4 years. He's like a very consistent Arey, player in he that was league. like for example, there are many people that have signed for Saudi clubs, right? During the like Beftimbi Gomez and players like these players who have been significant for certain years, but they got like irrelevant at certain point because of their attitude or something like that, and they were happy to just earn in Saudi, right? चल lastly मतलब एक टॉपिक में बीच में छोड़ दिया. देख, on pitch performance, off pitch shenanigans, ठीक है, transfer strategies, everything that a manager is part of, Eric Ten Hag has been questioned on the very same. ठीक है, tell, like, don't you think you need now is the time Manchester United fans should stop blindly following Eric Ten Hag for sure. ठीक I है, I think if I think Eric Ten Hag is questioned in a lot of things. I think the Mason Mount transfer in particular is very questioned. I think a lot of people are fed up with Anthony, the Ten Hag favoritism of Anthony. I think these things are questioned. As far as transfer targets are concerned, listen, dude, that is not at the end of the day. He's not really in. He's not really in charge of that part. Like because
I'll tell you right now on record, there is the first team interested in Kim Min-jae was Manchester United. Next thing you know, next week later we are paying 20 million above Kim Min-jae's clause and buying Mason Mount. So you can blame the board for not having money for both, or you can blame Ten Hag for suddenly pivoting because the Mason Mount thing happened suddenly, right? Where he decided he didn't want to play for Chelsea anymore, basically. Arey, that's the point, right? Like if you see why Manchester United paid so much for Anthony, there is for sure Frankie De Jong angled in that. Okay, my whole problem with that is all the signings, all the links, all the possible players that could have been very much close to Manchester United signing them are players Eric Ten Hag has an association with, or are players from Dutch nationality. ठीक है, Cody Gakpo, one player you missed out on and could have been your important player. That was a player that comes from Dutch tier, and Eric Ten Hag has seen him and knows him. ठीक है, there is क्या नाम है, कौन सा Højbjerg, Emil Højbjerg, right? He was a very good possibility. But Emil before Højbjerg was Amrabat. a last minute thing, right? Hmm, Like for Emil sure. Højbjerg, again, no one knew that Emil Højbjerg might be leaving even. I was like, Emil Højbjerg, what नहीं, he's leaving? Højbjerg is Tottenham are surplus. playing well. But Højbjerg is surplus. Now he's the only player that can generate certain money, like Sergio Reguilon and him are the players who can give you certain money. Because Undombele, you are not getting anything. Any team just takes him. That's the plus point for them. Okay. I Other saw than you that, saw you saw the picture of Ndombele in the Saudi. I was like, he's this not in guy, Saudi. He's in Galatasaray. sorry, Galatasaray. I was like, this guy is so out of touch, dude. Like, I was like, really, this guy. So I would have hidden, dude. I would have hidden. Like, after how my career started, knowing where it's gone, I would have really hid. No, but then Arey, see, he wanted this. He wanted Kane, couldn't get. Wanted Jay, couldn't get. Wanted Todibo, couldn't get. Like there are a lot of players where he wanted and he couldn't get. Yeah, like players that he has no link to. The thing is, no, I have a feeling he had a list, and based on the money, we just went down the list, and it got to a point where okay, I can't get what I want, so I'm going to get players that will play for me. Now, the best thing about some of these signings are that those players have rejected other clubs to play for Ten Hag. So that is a little bit good news, in my for sure. opinion. That is a little bit good when someone goes, sorry, sir, and Uh, comes this way. No, it's like good. Martinez, for sure, Martinez. Like Yeah. Malasia, we hijacked the deal, dude. We did a Liverpool. We hijacked the deal on that day. He signed for us. We hijacked him. We hijacked Who Malasia. was He he was wasn't going coming to for? us. He was going to France. I think he was going to Lyon. We hijacked it. He wasn't coming to us. It wasn't a guaranteed signing. And became the second fiddle. But you see what I'm saying? But yeah, but the only reason we have a left back is because he's injured. Otherwise, he would have played all these games Shaw's injured for, because he doesn't mind playing Malasia. So it's a little bit bad luck. But how it started was we were not even interested in him. Something happened, and then we were like, "Yeah, come." And he's like, "Yeah, forget France, dude." He was like, "France," Victor and then he Rook, just signed. Victor Rook and Richarlison got into an argument after the 18-year-old started playing Taylor Swift in the locker room. Richarlison called it the worst So music. what? Why are we even listening to Richarlison? He can't aim. He does a chicken dance as a celebration. Like, are we really going to take advice from this guy? Like, are we really going to take advice from And this guy? Ronaldo haircut too on the top And of it. Neymar, someone 5 years younger than him, he has a tattoo on his back, dude, which is a really creepy thing to do. Like when 5 years Insigne got the younger than tattoo, him. he's not even five, right? How much he'll be? Richarlison is 25, 26, Neymar's 31, 32. And at least when Insigne got the Maradona tattoo after he passed away, being Napoli captain, you go, okay, that makes sense. This guy has like people 5 years older than him tattooed on his body, dude. It's weird. This is the most weirdest thing ever. So let's not take his advice, dude. चलो Personal दोस्तों, opinion. काफी लंबी स्ट्रीम हो गई. दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रीम. मैं तो टाइमर देखा, आई रियलाइज माय गुडनेस इट इज अ लॉन्ग स्ट्रीम. तो कोई नहीं, हैड अ गुड डिस्कशन. चलो, विल टेक योर लीव. कल मिलते हैं एक और स्ट्रीम पे, और वीडियो आएगी तो वो जरूर देख लेना. तब तक के लिए सायोनारा. एंड हल्का बोला है क्योंकि 30 में नहीं है ना वो.